Hey everyone, hope I'm audible to you all. I'm having certain messages that some audio problem. Actually, I was not talking to you, I was talking to my team. So you might be seeing some lip movements, but that was not for you, that was for my team. Hope I'm audible. Can I see the chat box, please? Can you hear me? Can someone write that I'm audible? Am I audible to you? You are audible. Thank you so much. And please be on the muted mode. Please close the chat box. And be on the muted mode. Please put everyone on the muted mode. Thank you so much. You all have been wonderful people and the beautiful people. Okay. Good morning, everyone. This is Dr. Mamta Sharma, Organizing Secretary for the International Short-Term Training Program 6, which has gained its popular name as ISTTP-VI, with a chosen topic on greener living, reduce, reuse, and recycle. Under the component 8, enhancing quality and excellence, a 2.0 scheme, and Commissionerate and State Project Directorate, College Education, Government of Rajasthan, India, which is being organized by Rajarishi Government Autonomous College Alwar, which is popularly known as RRC, is signing in from this newly revamped, beautiful Jubilee Hall 2, equipped with ultra-modern facilities such as high-tech audio-visual system and voice-sensitive cameras and mics. On the behalf of our patron and principal, Dr. Hukam Singh Ji, and from the organizing committee, I welcome you all to the second day of ISTTP 6. Giving encouragement to others is a most welcome gift. For the results of it are lifted spirit, increased self-worth, and hopeful future. Sometimes challenges and struggles are exactly what we need in our life. May you welcome every effort, every struggle, every challenge. May you open your wings and fly. आप सभी का इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है माँ सरस्वती ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करती है कैन आई हैव द चैट बॉक्स क्लोज प्लीज वह वेदों की जननी है माँ सरस्वती समस्त ज्ञान साहित्य संगीत और कला की देवी माना जाता है माँ सरस्वती की आराधना करते हुए हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं We are beginning the second day of ISTTP 6 by remembering Goddess Saraswati and worshipping her. A small and the fast recap from the first day of ISTTP 6. We had an inauguration of ISTTP 6, which and the chief guest today was Sri Balveer Singh Chiller, who is Jila Pramukh of Alwar. Presidential address was given by the patron and the principal, Dr. Hugam Singh Ji. Welcome address was given by Dr. Upinder Singh, Nodal Officer RUSA, and thank you was given by Dr. Sanjay Dagan, who is Associate Professor of Physics at RRC Alwar. What is the use of a fine house if you haven't got a tolerable planet to put it on? To me, the lush carpet of pine needles or a spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. In the concert with of laws related to the protection of the environment, commercial processes have been designed to reduce the direct emission of organic products as well as of organic byproducts into the air, the atmosphere, the water, the aquasphere, and the soil, the terrestrial biosphere, and to recycle and reuse these chemicals and chemical waste as much as possible. Advanced technologies for the rapid, economical, and effective elimination of industrial and domestic chemical waste have been developed and employed on large scale, and in fact, advanced technologies for the control and monitoring of chemical pollutants on the regional and global scales continue to be developed and implemented. Satellite based instruments are able to detect, quantify, and monitor a wide range of chemical pollutants.
In addition, an understanding of the fate and the consequences of chemicals in the environment has increased dramatically, and they are now available for the means of predicting many of the environmental, ecological, and biochemical consequences of the inadvertent introduction of organic chemicals into the environment to much greater precision. So here the role of environmental toxicologists become very, very important because they have to quantify the pollutants and finally give it to the people, to the lawmakers, to the legislation, to the judiciary, and make the laws to protect the environment because we humans by the nature, we humans by the nature, we ought to be bound by the laws, else we will not take any pains to do anything. Organic chemicals used in a wide range of products and the industrial processes are an intrinsic part of life. Many products have contributed to making our lifestyle more comfortable, including domestic appliances, detergents, pharmaceuticals, and the personal computers involve the use of chemicals to varying degrees. We start our day with a toothpaste, isn't it? So Dr. Changani has joined. With a lot of gratitude and respect, I welcome Dr. Anil Changani. Sir, shall I continue with my, if you permit? Okay. So, thank you. So we start our day with what? With a toothpaste. It's a chemical. So I will just finish up as the speaker has joined. So lifestyle are more comfortable, including domestic appliances, detergents, pharmaceuticals, and personal computers involve use of chemicals to varying degrees. Chemicals are also an essential component of industrial production and are used in sectors ranging from agriculture, mining to manufacturing. Besides the benefits of chemicals being for the economy, trade, and employment, the rapid increase in their use build up our environment and also comes at a price for human health, wildlife, when not managed effectively. Potential adverse impacts on the humans include acute poisoning and even long-term effects such as cancers, neurological disorders, and birth defects. For the environment, harmful chemicals can trigger eutrophication of water bodies, ozone depletion, and pose threat to a sensitive ecosystems and biodiversity. And finally, we are moving towards bettering our mother nature. So, I feel very delighted to introduce to you all our speaker, our first keynote speaker of ISTTP-VI, Dr. Anil Kumar Changani. Dr. Anil Kumar Changani is an environmental ecologist, field biologist, and presently working as a professor and head, Department of Environmental Science, Faculty of Science, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. With 20 years of teaching and 25 years of research experience, presently he also works as a director research and dean student welfare at MGS University Bikaner. Dr. Changani has two post graduations, one in education psychology and other in zoology. His PhD from JNV University in 2011, and he awarded DSc from JNV University Jodhpur. His fields of specialization are behavioral studies on mammals and birds, genetic and virological studies, desert ecology, with special reference to traditional environmental conservation practices, common property resources, environment management, biodiversity conservation and management, and climate change and environment impact studies. He also served as a member of IUCN, World Conservation Union and Conservation International Birds and Mammal Species Survival Commission, Breeding Specialist Group from 2005 onwards. It's a great honor, Dr. Changani. He visited a number of foreign countries with many scientific and academic assignments. The list is long, and I don't think I'll be able to read all of them. So I will move a bit fast and what to leave. Now I'll say something very important. In the last
years, he made and advised several national and international films and documentaries with BBC Bristol, NHK Japan, German TV, French TV, Earthwatch USA, TV New Zealand, Australian Broadcasting Corporation, ABC, Doordarshan New Delhi, Star TV, ZTV, NDTV, EMRC, JNV Jodhpur, etc. Dr. Changani received second time Chaturvedi Award on 16/8/17 and then again in 2012 for writing best paper in the field of environmental wildlife by Indian Forester, Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun. He has got like uh, best stay Jodhpur Foundation in 2000. He got the state award from Government of Rajasthan. Best paper award by Zoological Society of London in London. Recently, he got Maru Ratna Award on 12 July 21 by Desert Environmental Conservation Association, Jodhpur. There is something about your I-10 index, Dr. Changani. I'm missing that. Where was it? Here. He published over 130 research papers in international and national journals with high impact factor from 1.55 to 5.6, with 914 citations, with H index of 18 and I-10 index of 20. That's commendable. We are very happy and pleased to have you with us, Dr. Chingani. And I would request you to kindly start with the keynote address. Stage is all yours. We can't hear you. We can't hear you. Please unmute yourself. Okay, am I audible? Yes, very much. Thank स्वागत you है so आपका. much. I'm so thankfully, humbly, thank you all and organizers for giving this opportunity to me interact with the young researchers and delegates. And thanks to you for giving this wonderful and a large introduction of mine. Though इसका मैं नहीं चाहता कि कोई जो participant है उसके influence में आए. What we need to share with them, they should listen that and give their own view. I think why this green living, reduce, recycle, and reuse initiative needed by the academicians and especially I must congratulate Principal RR College and Organizing Secretary Dr. Mamta Sharma for taking this much needed initiative. And this is the urgent need of time. We need to understand the reuse and recycle and reduce the uses of resources. I think since morning to evening, if we check our own lifestyle, if we check our own itinerary, if we make our time budget, what we are using and why we are using, 80% of them are useless, not needed in life. And that forces us to use excess resources, grab the resources, increase our greed, and satisfy our sensory organs, which is not needed. And that's the way the market forces are using our brain. We are just a kind of puppets, I must say. We must humbly accept this. And nowadays, we are all puppet of technology and market forces. Whatever they ask us, we are just doing word to word. We are settling our demands on their market values. We are increasing our greed. We are increasing our demands, which is not needed. So, as Rashtrapita Mahatma Gandhi said, that Mother Nature has produced so much to fulfill requirement of every creature on this earth, including humans. हम लोगों ने, I think, I beg pardon if I can speak in English. Sometimes is that okay, or in Hindi it's okay. Because it's an international audience, so I'll prefer to be in English. So Mother Nature cannot fulfill greed of a single individual on this earth. Nature can fulfill the requirement of all the creatures, unicellular to multicellular, but cannot fulfill the greed of the single individual or a people, a person.
And we forgot our traditional practices. That's very important. On the name of technology, on the name of modernization, we go for that. But at the same time, we should not forget our culture, our ethical values, our traditions. Those were settled and laid down by our ancestors, and they are still working. The only thing we are not access to that, or we want to ignore them. And whatever problem today we are facing is purely because of that ignorance, that lack of knowledge. So my presentation is not going to be very scientific. I'm just going to recall you all what kind of traditional practices we have seen in our houses, whether it is green living, whether it is reduce the resources utilization, or it is reuse of resources, or it is recycling of the resources. So these are technical terms nowadays. But if we check our past history, before 40 years, we used to live in a house which has no fan, no cooler, no air condition. Even in the rural setups today itself, people are just spending their life without electricity. There are many villages. But nowadays, on the name of development, we are forcing them to utilize all kind of electric gadgets, air conditions, vehicles, but we don't know how to regenerate the natural resources. From where this requirement which we are making, forcing them to increase their demand, who is going to fulfill that? And that market for the petrol, which used to be 10 rupees per liter or 20 rupees per liter, is now 100 rupees per liter. So if we can go in the public transport, he used to go with the car. If I recall my family setups, we used to wear clothes in between. I used to get clothes from my elder brother. And now we have some practices in the society or in the urban areas or the modern cities or metros. The people are giving their used clothes to someone, or there are some places where they can put those used clothes and can be given to the required people. But this was very much popular in our houses. If my shirt is damaged, my t-shirt is damaged, that can be used. If my pant is damaged, that can be used as a bag, carry bag. By that time, there is no plastic. Now we are making a fancy kind of events and making a kind of campaigns to make the reuse the thela, झोला बनाएंगे, plastic bag को replace करेंगे. If we can check our houses, if we can check our old images, each one of us, any image of your house, old image, some 30 years before or 40 years before, you will find all these things, what we are discussing, I'm sharing with you. And there is hardly any ill intent in the mind that why should I use my elder brother's clothes? We happily accept. As soon as it gets shorter to you, please give it to me. Even from friends, coats and hats, we used to take. market. And we used to use the thela. We don't have any sinfulness. We can go with the bag. I still go with the carry bags. मेरी जीन्स के बने हुए थैले लेके जो मेरी माताजी सिलाई मशीन पे बना देती है, मैं आज भी बैग लेके जाता हूँ फील्ड में. मेरे को शर्म नहीं आती उसमें. अब शर्म लोगों को इन चीजों से आने लग गई, और इस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे. वी आर हियर ऑन एन इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस ऑल दीज ग्रीन वैल्यूज एंड ग्रीन प्रैक्टिसेस. नाउ आवर हाउसेज आर फुल विद एयर कंडीशंस. Our houses are full with the electric gadgets. All the elders, many of you are in this current practice. Children are here and there, somewhere television is on, somewhere air condition is on. You just follow them whole day. None of us teaching them to reduce the energy requirement. Switch off your light, reuse. No, they are not. Even this cell phone, we all are connected with this. Every alternate 2 year, you all, I can take guarantee without knowing any one of us. You people are replacing cell phone every year, or maybe twice in a year, many of them. नहीं, इसका requirement नहीं है. It is just a communication thing. And we are all going through the social media. We are becoming social, and without knowing our practice. So what he is teaching us, we are just following blindly. So I'm sure we all are aware about our traditional practices.
whether it is different geographical region or it is Rajasthan or Gujarat or Gurgaon or Delhi or Metro, Mumbai, we all in the use. Our houses are full with the lights, natural lights. Even if you go to the villages, there are people still using the traditional way of living, and their houses are full with the natural resources. And they don't require any kind of electricity, they don't require any kind of sophisticated gadgets. And they are healthier than us, they are happier than us. So we don't have any time to think about all these things. Thanks to, again, these organizers and especially Principal Saab and Dr. Mamta Sharma, the organizing secretary, a teacher is regularly doing this to make aware you people. But sometimes one doesn't need any teacher to teach. You just see around you. You just check yourself what you are doing from morning to evening. Shaving कर रहे हैं, पानी बचाना है, light बंद करना है. We are, I think, I just say personally, of my opinion, we are all fed up with these comments. Reuse and recycle and all. But none of us is making this in practice. Then how things are going to move? So my presentation is not going to be much about many technical things or environmental issues. I'm just giving you the brief that still there are people, there are societies on the earth, especially in Thar Desert, they are living very green and very healthy and happy. They are preserving their ecosystem, they are preserving their natural resources. And that kind of model we need in our society, in the modern society. It doesn't mean that we don't want development, we don't want any kind of invention. We must go for. But at the same time, if we are ignoring every now and then our past, our better practices, we are going to suffer. And as a result, everyone knows that we have been suffered a lot with the COVID disease, a small virus. But at the same time, people who are still following their traditional way, they are the least affected society in this earth. They won't get any effect of this retrovirus or this virus. They happily come out with this mass calamity. None of them sacrifice their life. But at the same time, in the urban areas, whether it is Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Calcutta, Bangalore, people are dying in thousands. Whether you talk about the London, Washington, America, Europe, all Western countries were facing severe problems and still facing. And this is not the end of the COVID. Sometime you get another virus. So the way we are heading, we are going to invite so many problems. So I think you and me cannot stop all these things, but we can educate people. We can suggest them that these are the existing models and there are people living with this practice and they are very happy. So things are not totally gone. We still can rethink. We still can plan for that. So if I need some help from the technical team present now, I'll go there and then your screen entered and then I go share screen. Is it visible? Your computer. Yeah, we can see your desktop. Okay. Right. Yeah, we can see your slides. It's traditional practices of green living in Thar Desert. Okay. Right. And I think I may need help to make it full screen or Dr. Mamta Sharma, will you please help me how to make it full screen? Press F5. Sorry? F5. Control key F5. F for fruit, F5. Control F5. Uh, on the top, the first line of your laptop, you have control keys. Press F5.
You can click the slideshow. Go upstairs. No, leave this. Leave this. Go on the top row. There's a share slideshow. There's a something called slideshow. Click on the slide. No, move ahead. Huh? Click. uh, Start from the first slide. from From start from go the up. Yeah. F5. Uh, Okay, thank you. Thank you so much. You are wonderful on technology. thank you. F5 button पर press करते हैं shortcut या So, am I audible? yes. Okay, thank you. Thank you so much. So, if we see around, I'm just talking about it because I'm living in desert. I lived so many years in the desert and spending so much time in the field. But even if you are in Himachal, even you are in Northeast, you are in Africa, you are in Ethiopia, you are in Gulf countries, wherever you are, there are still nomadic and traditional people who live their life without any electricity, without any telephonic communications, without any telephonic towers and electric towers and Wi-Fi towers and all. And whatever material you can see in their houses is all natural and local. And they are very much self-sustained. So they are very happy and they are very healthy. So once they use this local material, the grasses, to make their houses, their shades of the cows, buffaloes, and camels, and once it is utilized by them, they can use this in the fuel wood. And the leftover of the fuel wood they can use as a manure, as a antifungal treatment, and to preserve their food materials and whatnot. Everything is been reutilized, reused, and then it is with nature. And nothing pesticide and some chemicals and some electric devices and some kind of radiation, nothing is around them. And they are very simple living. So we just think something like this, how better we can do in our urban setups. We can see so many experiments and models by the academic institutes or the foreign institutions or American institute making greenhouses. And that needs a lot of cost that is unaffordable for us. Whereas these are the low cost, very economically viable, and very easily accessible practices. And such kind of green practice with full light, and it is fully eco-friendly. They don't afraid of climate change. They don't afraid of the excess rains. They're not afraid of increasing temperature. Whereas we always are facing these problems and discussing these problems. In a technical term, greener living is a means of developing sustainable habits. Again, habits. We need to change ourselves. Then we can change our surroundings. So in daily life, their routines, reuse of the resources, and depleting them makes no sense. I think we need to understand our surrounding, and better management is required, nothing else. I'll not go into details. So I just go to the Thar Desert. So this is the Thar Desert scenario we are living in. And this kind of agro-agriculture or agro-pasture landscape is around us, with all kind of trees and shrubs, and they are very hardy. They are not affected with the snowfall. They are not affected in 55-degree temperature. And since last hundreds of years, these natural resources and vegetation is surviving. And simultaneously, along with these floral diversity, the faunal diversity is equally sustaining and surviving in this Thar Desert. So almost 12 districts of the Rajasthan covered under the Thar Desert. And we have some of the protected area in Thar Desert. For example, there is a small protected area here in Churu, is Tal Chapar, near Bikaner, is a Gajner Wildlife Sanctuary. This is Tal Chapar here. And this is a big chunk of land, almost more than 3,000 square kilometer area in Barmer and Jaisalmer district, known as Desert National Park. This is not a national park technically, it is a wildlife sanctuary. And all these kind of practice made by the governments and the authorities to preserve desert resource, desert diversity,
the Thar Desert's biodiversity. So if we talk about the total land area, the land cover of Thar Desert, almost 1.8% is the forest. This is very serious situation that despite of very small land as protected area or protected forest, just 1.8%, but still we have n number of diversity, which is in human landscape. And the area which are not protected, but definitely they are protected by the traditional practices. They are known as common property resources in the Thar Desert on the name of gochars and pastures and orans and water bodies and all. And that land is about 5.6% more, almost more than triple of the protected areas. And they are basically the backbones of our society survivals and our livelihood, our day-to-day life, our livestock survival, survival of the wild animals. And they are supporting as food resources, water resources, and all kind of living materials come from these common property resources. And then remaining 9 to 2% area is agricultural land, whether it is a fallow land or intense agriculture or canal agriculture or tubewell agriculture. So almost 92% area of the state is human landscape. So humans are I think there's some technical problem at the end of the speaker. Let's wait until it is resolved. Thank you for your understanding. I think some Wi-Fi problem they are facing in Bikaner.
at the end of the speaker. We are waiting for him. Till then, let me continue with what I was talking to you all about the. Please, ये क्या हाँ please don't share anything on the screen. I request all the participants. So we were talking about the industrial pollutants or the effluents who get into the environment and become the pollutants. So let me continue with that. Industrial processes and rising consumption have also led to the rapid increase in generations of hazardous wastes. These wastes not only pose risk and hazards because of their nature, but also have the potential to contaminate large quantities of otherwise non hazardous waste if allowed to get mixed. It is increasingly recognized that the sound management of the chemicals throughout their life cycle, as well as the proper segregation, treatment, and disposal of the hazardous waste, are critical to the protection of vulnerable ecosystem, biodiversity, and the livelihood and the health communities. And the health of the communities to address concerns related to the harmful organic chemicals and waste is necessary to promote chemical safety and provide ready access to information on toxic chemicals, and also to promote chemical safety by providing technical guidance on the regulations that govern the manufacture, use, and disposal of organic chemicals. Although it may be felt that the effect and the activity of organic chemicals in the environment must, by definition, focus on the chemistry of these chemicals, knowledge of various environmental regulations is always helpful in determining the analysis that must be performed. These laws are designed to help protect human health and the environment. The Environmental Protection Agency (EPA) is charged with administering all or part of each law. The definition of hazardous waste or substances and the pollutants or the contaminants specifically exclude organic chemicals, including crude oil or any fraction thereof, unless specifically listed. Although there is no definition of organic chemicals in Superfund, the Environmental Protection Agency interprets the organic chemicals exclusion provision to include organic chemicals and the fractions of organic chemicals, including the hazardous substances such as benzene that are indigenous in organic chemicals and are therefore included in term organic chemicals. The term also include hazardous substances that are normally mixed with or added to crude oil or crude oil fractions during the refining process, including hazardous substances whose levels are increased during refining. These substances are also part of organic chemicals because addition in part of the normal oil separation and processing operations at refineries that produce the product commonly understood to be organic chemicals. However, hazardous substances that are added to organic chemicals, example mixing of solvents with used oil, or that increase in concentration slowly or solely as a result of contamination of the organic chemicals during use are not part of organic chemicals and thus are not excluded from the Superfund. Furthermore, as a result of involving environmental awareness, organic refining operators face more stringent regulations in the treatment, storage, and disposal. That is TST, treatment, storage, and disposal of hazardous waste. Waste management laws govern the transport, treatment, storage, and disposal of all manner of chemical waste, including municipal solid waste, hazardous waste, and nuclear waste. Waste laws are generally designed
minimize or eliminate the uncontrolled dispersal of waste materials into the environment in a manner that may cause ecological or biological harm, and include laws designed to reduce the generation of waste and promote or mandate waste recycling. Regulatory efforts include identifying and categorizing the waste types and mandating transport, treatment, storage, and disposable practices. Thus, under the recent, a larger number of organic chemical compounds have been and are being studied. Long time methods of disposable, such as land farming of chemical waste, are being phased out. New regulations are becoming even more stringent, and they encompass a broader range of chemical constituents and processes. So, I would I'm talking about the chemicals into the environment, and finally they're harming the human health. I was talking about the study. I was talking about the study that was conducted in Jaipur, Rajasthan, where it is one of the rare studies where human samples are used to estimate the level of pesticide contaminants. The human samples were cord blood, placenta, maternal blood, and the cord blood. The same study was conducted in Lucknow by Industrial Toxicology Research Center, ITRC Lucknow. And the same mapping, the same study was conducted in Jaipur. And trust me, the levels which we found, like I was the one who did that project with Indian Council of Medical Research, and the levels which we found, they were alarming. At this stage, I was talking on the terms that mother's milk is not fit for drinking. So imagine that we are reaching to the extent that mothers are not able to feed their babies. When we are seeing that mothers are not able to feed their babies, then we can also say that our food is not fit for eating, our air is not fit for breathing, our atmosphere is not fit for living. Where do we go? Where do we go? We have a choice that we don't like this colony, we don't like this place of this part of city, or we don't like this city, or we don't like this state, or we don't like this country. We have a chance of moving to a new colony, to the new city, to the country. But do we have a chance? Do we have a thought? Do we have a precise thinking that can we move to another planet? We don't. We actually don't. We actually don't. So it's high time for us to think on the talks which we have been, like RRC is very vigilant, and like me, I have devoted my life for environmental conservation. So we do really need to think about it. We need to work. As Dr. Changani was saying कि हम कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि हमें तो मोबाइल बदलना ही है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है. Our kids are not ready to live without light. Our kids are not ready to live without Wi-Fi. The first thing, if we go out and we rent a hotel, तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि वाईफाई है कि नहीं. हम ये नहीं पूछते तुम्हारे पास अच्छा खाना कौन सा है. एंड दैट्स अ फैक्ट. इवन आई ऑल्सो आस्क. मैं भी उसी में ही हूँ. तो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. एक बड़ी हंसने वाली बात मैं आप सब लोगों से शेयर करती हूँ. जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं, हमने कोई फॉर्म भरा सपोज, या कुछ भी लॉग इन किया, तो वहां पे चीज लिखी आती है, कंफर्म दैट यू आर नॉट अ कंप्यूटर, वेरीफाई दैट यू आर नॉट अ कंप्यूटर. तो अब ये हालत आ गई है कि हमारी डिपेंडेंसी इतनी हो गई है, हमसे ही कंप्यूटर पूछ रहा है कि तुम कंफर्म करो कि तुम कंप्यूटर नहीं हो. सो दैट इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी वी हैव ऑन द computers or the technology. So I'm just extending the talk which has been given by Dr. Changani कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीजों पे बहुत ज्यादा है.
मैंने आपसे एक बात करी थी, वी वर टॉकिंग दैट सुबह उठते हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टूथब्रश करते हैं, वी टेक अ पेस्ट ऑन अ ब्रश एंड वी ब्रश आवर टीथ, दैट इज अ केमिकल। उसके बाद हम सोप यूज करते हैं, दैट इज अ केमिकल। हम शैम्पू यूज करते हैं, दैट इज अ केमिकल। और जब हम नहाते हैं तो ये सारी चीजें पानी में जाती हैं, दीज आर सल्फेट्स, दे कंटामिनेट आवर ग्राउंड वाटर, एंड दिस इज हाउ आवर लाइफस्टाइल इज, हम रह ही नहीं सकते। We have to maintain the hygiene and sanitation. So the dependency start from the day a human wakes up. It goes till the night he sleeps. क्योंकि सोने के लिए एसी चाहिए, एसी के बिना हम सो नहीं सकते। गर्मी इतनी ज्यादा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यूवी रेज इतनी बढ़ चुकी है, वी नीड टू लिव इन द क्लोज कंपार्टमेंट्स with ACs on, so we save ourselves from ultraviolet radiations. Can we have the camera, please? So things goes on like this. Our dependency on chemicals, on technology is very, very high. बिना इंटरनेट बैंकिंग के तो हम पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। बिना एटीएम कार्ड के हम पैसा नहीं, कौन बैंक जाएगा? अगेन द टेक्नोलॉजी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी आर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, बट एट द एंड हम ये भूल जाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से, इन कंप्यूटर से जो हमारा हाँ, यूपीआई भी कर सकते हैं, पर दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी बेस्ड थिंग। समबडी कमेंटेड, प्लीज ओपन द चैट बॉक्स, आई वुड लाइक टू नो व्हाट पीपल। Yes, you are right. Our grandma never used shampoos and all. और हमसे बहुत अच्छे बाल थे उनके। पर अब क्या करें कि इस पॉल्यूशन वाली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली, ओके। अगर दिल्ली में मैं दिन में निकल जाती हूँ, रात को आती हूँ, दूसरी जगह मैं अपने बाल नहीं बांधती, धोती हूँ उस शैम्पू से, तो वो बाल में मैं कंघा नहीं डाल सकती क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो वो बहुत लकी थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, वो बहुत सुंदर साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह कर गए। सो दिस इज व्हाट कि एनवायरनमेंट अब ऐसा हो चुका है कि हम इन चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। एंड इमेजिन हम जहां भी जाते हैं, हमें, हमने चाइना को भी शायद पीछे छोड़ दिया होगा, आई रियली डोंट नो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिया, जो पॉपुलेशन ब्लास्ट इंडिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में ही हो रहा है। पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, आई थिंक एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन का ये सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि हर कंट्री को जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं वो लोग, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे के पहले कहते हैं कि जब भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होता है, इकोनॉमी इज एट स्टेक। इकोनॉमिक इफेक्ट होती है, दो तरह से इफेक्ट होती है। एक तो अगर केमिकल्स का यूज बंद कर दें तो खाना नहीं बनेगा, वो इतना धान उत्पन्न नहीं होगा, इतने गेहूं नहीं होंगे। और अब हमारा एक नारा है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम जाएं, एसडीजी में, तो उसमें है कि पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है। तो पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए धरती से उतना खाना तो उगाना पड़ेगा हमको। सो इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। बहुत बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। तो एक तो वो केमिकल्स जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, दे आर द लाइक पोटेंट कार्सिनोजेंस, टेराटोजेंस एंड म्यूटाजेंस, पेस्टिसाइड्स। दूसरा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, अगर उसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हायर करती है उस उस टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजी को खरीदना ही बहुत महंगा है और रन करना उससे भी ज्यादा महंगा है। मार्केट में आई थिंक हम, आई डोंट नो, वी ऑल यूज इन इंडिया डीजल एंड पेट्रोल कार। सो जो नॉर्मल पेट्रोल है और जो नॉर्मल डीजल है, अगर वो लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है बनिस्बत अगर हम वहां पे ग्रीन पेट्रोल लें। क्या कोई क्यों खरीदेगा ज्यादा पैसा देके ग्रीन पेट्रोल? मार्केट में कई तरह की दालें मिलती हैं, पर ऑर्गेनिक pulses are much more costlier than the normal pulses. People like us can afford, but what about the poor people? They don't even know what is organic and what is inorganic, what is non-organic.
is just for them. So it's a very big question, and I can talk endlessly. And I really hope that is Dr. Jaswinder has joined. Just check, Sheetal. Dr. Jaswinder. Yeah, we're about to call our second speaker, Dr. Jaspreet. Actually, Jaspreet. So I'll just introduce to you our second keynote speaker. I will continue this talks with you later. जब भी फिलहाल कि मुझे तो ये बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इन बातों को समझते हैं और शायद हम लोग इन बातों को कहीं आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, he is here. So Dr. Jaspreet is here. Let me introduce Dr. Jaspreet to you. Dr. Jaspreet is working as an associate professor and head of the department in CSE department, GT Goenka University. He has over 20 years of teaching experience in the computer science and engineering domain, and his research interests include machine learning, algorithms, design, optimization, and wireless network. Dr. Singh has authored and edited 4 books with international national publishers and has also been awarded 3 patents. That's very great. Dr. Singh has over 30 scholarly publications, with majority of them in Science Citation and Scopus Index journals. Dr. Singh has been conferred Research Excellence Award in 2022 by CIEMA and Research Excellence Award 2021 at GD Goenka University. Dr. Singh has a rich experience in handling academic and administrative responsibilities in different capacities, like head of the department, curriculum committee head, program coordinator, industry institute cell, head examination, publication club, etc. He has been invited as a keynote or the resource person or the session chair or the advisory member in many conferences and faculty development programs. He has guided more than 100 plus dissertations and master's level. That's a big number. Dr. Jaspreet Singh, sir, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. Now I would request Dr. Jaspreet to kindly start with his keynote address. Please make Dr. Jaspreet co-host and All right. Thank you so much. Am I audible to all? yes, sir, you're very Okay. Thank you for the great introduction. And I thank you, Professor Mamta Sharma. I also thank you, the principal, Professor Hukum Singh, for giving the opportunity of having an interaction with learned people. I will today like to share my means some inputs on the like we all are publishing in journals, okay, and we often have to select the journals. So I would like to put my light on how to select a journal. Like for example, if you are in the sciences stream, then what are the things you may look forward, especially when we talk about the good index journals. So how we should be selecting a journal, and there are different metrics, okay. These metrics have a meaning, and what is the meaning of these metrics, okay. So I would like to share that. Before that, let me share my PPT with you.
I hope this screen is visible to you. Green. And we can see your PPT as well. Yes, thank you so much. All right. So the topic is publication and research metrics. This is the flow I will be taking up. It's slightly technical, I would say, since I am from the computer science and the sciences stream. So my focus will be from that point of view. I know means here we have people from many different disciplines. So okay, but the publishing is same. Means we all are selecting, looking for good journals. So we often whenever we are writing a paper, okay, we are using citations in our researches. Okay, citation is nothing but we are giving a reference to already published work, whether it could be a definition, it can be some published result, some outcomes, some algorithms which are already being published. Okay, so we need to do the citation whenever we are publishing. Now, there are two parts to a citation. One is the in-text citation, and the other is the end of the paper citation. Okay. In-text citation basically means that, like, for example, can you see the definition of citation? And there is a number one written over here, right? So, this number one is the in-text citation that whenever we are quoting some result, some definition, Mute then कर we the reference. Okay, this is the in-text citation, and in the end, there is a bibliography or the reference list, as we say, and that is the end of paper citation. So there are two parts, right? I would prefer rather than being a unilateral talk one way. If you have any questions, then you can always use the mic, okay? Or you can put the questions in the chat box. Though I will not be seeing the chat box, but I would request Professor Mamta if she can let me know if there are any questions. Then it would be helpful for me. So, why we need to do the reference? Okay, the reference is to give the credit of the work which is already done, and it is also needed to address the problem of plagiarism, because if you do not do the citation, then it will be counted as plagiarism. Okay, and there is another purpose that if I want to see the earlier work which was done on the basis of which I am doing my work, okay, people should be able to see the original work. Okay, so this is the purpose of a reference. Now, today, references, we have various tools for management of the references. Earlier, it was a very tedious task, okay, to arrange the bibliography citations. Now, what happens? You know that there are hundreds and hundreds of different citation styles. Okay, for example, someone is using EPA, MLA, IEEE, Vancouver style. In fact, there are limitless number of such different formats. Okay. Now it becomes very tedious for the author. Suppose I communicated to a journal. Okay. The paper, let's say, is not accepted. Then I have to resend to another journal. Okay. Now I have to change the entire citations, okay, according to their style. So it becomes a tedious task for the authors. Okay. So therefore we have certain tools which make it very easy. You don't have to means this all is managed by the citation tools. In fact, though I am not covering the citation tools in today's session, I may take in some other session, but these are some of the popular citation tools. Okay, you must have heard of the name EndNote, Zotero, okay, Mendeley. These are some of the citation tools. Some of these citation tools are paid and some are open source freely available. Okay. Now, when we want to select a journal for publication, so we are looking for some indexing. We always say, no,
index journals. You should publish in an index journal. Now, what is the meaning of index? Okay, index basically reflects the quality of a journal. Index basically tells us that the journal is associated with which indexing services. Now, there are many reputed indexing services which are available, and a journal may associate with some of the reputed indexing services. Then we say, for example, you must have heard of the name Scopus. Okay. Today we are talking about the UGC care list. We are talking about the Scopus publications. We are talking about, if you are into sciences, then we talk about the SCI publication, Science Citation Index. If you are into social sciences, then we have Social Science Citation Index. There is Art and Humanities Citation Index, and so on. Okay. So these are some of the citation services. These are some of the indexing services to which a journal may associated. Okay, and if a journal is associated with some of these indexing services, it adds to the value of the journal. Okay. Now, there are many different indexing services. As I told you, one of them is the Thomson Reuters. Okay, Thomson Reuters, earlier it used to be, now it is called as Clarivate Analytics. Okay, this is basically the agency or the body, you can say, institution, which is responsible for giving the science citation index to the journals. You must have come across the term Web of Science. Okay, the Web of Science, okay, the SCI, and then the SSCI, etc. These are the proprietary terms of the Clarivate Analytics. Okay, so the Web of Science basically was a database which was created from the scratch. It contains some of the rigorous journals which are there from the year 1900 onwards. Okay, so from 1900, from the year 1900, it contains some of the rigorous articles, journals, researches. They have been created into this database, which is known as the Web of Science. Okay. Now suppose these are some of the factors. If a journal wants to be associated with Clarivate Analytics to be indexed, okay, then these are some of the small list of parameters. There may be many more parameters, okay. Some of them are the timeliness of the publication, okay, how much time it takes to publish, okay. uh, Suppose a journal publishes your research in 10 days, 15 days, okay, then it raises a question on the efficacy of the review process, okay, because you know that the reviewers basically they are the experts, okay, and they are not paid for giving the service. Okay, if I am reviewing an article, I am not paid for it, okay, but at the same time I have to take out some time for, because it is a again a rigorous process. If I'm giving the comments to a paper, then I need to have a good domain knowledge, okay, and also I need to devote some time for it, and from my hectic schedule it may take some time, okay. So the timeliness of the publication, if it is too short or too long, okay, is not counted as a good thing. Then the quality of the review process, what are the kind of reviewers you have, what are they basically from which part of the country, are they from around the world or localized from some particular region. It is good to have the reviewers from across the globe, from different countries, from different you can say domains, okay. That adds to the richness of the review process, okay. Then comes the subject area, how unique the subject areas, whether it is unique, some new domain, like for example, machine learning is something we heard a lot about it in the recent past.
Though machine learning is not a new term. In computer science, machine learning was there even 20 years, 30 years back also. Okay, it's just that it has got so much attention in the recent times that it has become a buzzword. Okay, then the editorial board. The editorial board means from which are the editors of the journals, what is their recognition, what is their universities they are associated with, and so on. So these are some of the factors which are considered by Clarivate Analytics for indexing purpose. All right. I hope I'm audible. Just checking it. Am I audible? Are there any questions so far? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. Any questions so far? No, sir. No, sir. Continue, sir. Okay. All right. So when it comes to indexing, now we talked about the Clarivate Analytics, but that is just one of the many players in the market. There are many different, for example, PubMed is there for the medical, Medicus, Medline, Scopus, Google Scholar, and many more. Okay, these are some of them. The list is endless though. There may be hundreds and hundreds, even thousands of them. Now, when we talk about the counterfeit journal, then how do we identify the counterfeit journals? So one way to identify the counterfeit journal is using the indexing they are associated with. Now there are many fake indexing services also available in the market. They offer some payment and they give you the indexing. So we should be knowing what is the reputation and history of the indexing services. If a journal is asking for a payment, upfront payment, then definitely means they are not doing it for to maintain the quality. They are doing it for monetary purpose. So there are many such indexing services which have come up in the recent past, and because there was a focus on publishing research by the UGC and the other bodies, so these indexing services also have come up. They are charging a fee and they give an indexing to the journal. So this is what we see in many of the counterfeit journals. So we should be able to identify which are the counterfeit journals and which are the good reputed journals. Okay. So how to do that? I would rather like to show you an example. Okay. I would open my browser. Is the browser visible to all of you? Okay. Can you see the this browser? It's the name of a journal. Ji, sir. Okay. Now Ji, you sir. can see that it's written Best International Journal, Open Access. Okay. Impact factor is 7.25. Okay. Now this impact factor of 7.25 means this is a very good impact factor. When we talk about the impact factor, I will come to the meaning of the impact factor also later in my slides. But 7.25 is a very good impact factor. So it should be a good journal. Okay. Now we should, before submitting our research to such kind of journals, we should look for some other things also. Okay. Now let us try to explore how this 7.25 impact factor is obtained. Okay. Now impact factor is a metric which is given by Clarivate Analytics. So no other agency or institution can issue the impact factor. Only the Clarivate
Analytics has the is authorized to issue the impact factor. So if this journal has an impact factor, then it should be also be affiliated to Clarivate Analytics. Okay. So we should first of all look for abstracting and indexing. Now, okay, let us explore this journal. About the journal. Okay. You can see over here rapid publication. So rapid publication means I think within few days your article will be on this journal. Index journal, you can see over here. Now index journal, but what is indexed? Okay. So you can see over here, this is what they are saying. It is indexed to like what? Menley, but Menley is not an indexing service. Okay. Menley is just a software which is used for citation management. Okay. You look at the other things over here. Index Copernicus, at Academic Resource Index, means these are some of the things which you would never have come across. Means these are not reputed indexing services. They are just the names to show. You can see Facebook. Now, does anyone publish your article on the Facebook, LinkedIn, Twitter? Just see the names. Okay. So this means that okay, they have written Clarivate Analytics also, but this is not authentic. Okay. Now, if they are mentioning Clarivate Analytics, okay, then this means that because the journal is receiving an impact factor, then you must verify it from the database of Clarivate Analytics whether this journal is indexed with them or not. Okay. So just mentioning over here does not mean that this journal is actually associated with Clarivate Analytics. Okay, you should always verify it. Now, I go here to the Clarivate Analytics. Okay, now let me put the name of the journal here. The journal name is IJTSRD, right? This is the short form. Am I getting any result? No, there is no result. Okay, even if you type the full form of the journal, then also you will not get anything because this is actually a fake journal, right? So this means that this journal, whatever they are claiming, this impact factor, Clarivate Analytics, etc., this is all fake. Okay, I give you another example. Another journal, again impact factor. Now look at the indexing. What do you see over here? Script. What else? Google Scholar. What else? Hardly anything. Okay. So impact factor can be issued only by Clarivate Analytics. Again, this is a fake journal. Now let us, so this is how you must first of all explore the journal. Now let us look at some good journal also so that you identify the difference. Okay.
Okay, this is a journal by Wiley. Now, computational intelligence. Okay, you can see the impact factor is written over here 2.142. Okay, now because this is a genuine impact factor, and genuine impact factor even of 2 is a good impact factor. It's not there means giving a false claim. So this is now you how you must verify this. Okay, you can verify it from here. Just write the name of the journal. Are you getting a result? Yes. Can you see this? I hope it is visible to you. Okay. So if this is visible, okay. Um, so can you see that this journal name has come, and you can see that science citation index expanded. Okay. So it's there on the list. Okay. Further, if you go to the journal, okay, just explore the journal. Let us look about the journal. Okay, about the journal will contain some information which will be helpful, and you can see that. Can you see this list abstracting and indexing? Okay, this is the list to which a journal is indexed. Now just scan through the list and you will see that science citation index, Scopus is there. You can see over here. Science citation index is there. Okay, so all this is mentioned, and we also have verified from the other website whether this is actually authentic or fake. Okay, so I hope that this will be helpful in selection of your journal, right? So you must always do the homework before sending your papers. Always select the journal, right? It is important. Are there any questions? So should I continue further? Okay. Let me come to, these are some of the different indexing services. Okay, let me come to some of the general metrics, the impact factor. This is the most talked about the general metric, the impact factor. What is the meaning of impact factor? Impact factor basically is calculated over a period of 2 years. And how it is calculated? It is calculated by the total number of citations received for an article in the year X for the last 2 years. Means, for example, we are talking about, let's say, impact factor 2022. Then take the last 2 years, 2020 and 21, and how many citations were there for that particular journal in total in these 2 years, divided by the total number of articles in these 2 years. So once you divide it, you get the average number of citations. So the average number of citation is the impact factor. So better the figure, the more it is a journal is counted as good journal. Okay. So for example, if the impact factor is 2,
on an average, it is receiving 2 citations per year for each of the article, right? This is the meaning of the impact factor. Now, the impact factor is issued only by the Clarivate Analytics. No other agency or institution is allowed to issue the impact factor, right? Similarly, there is another metric which is the 5-year impact factor. Now, the impact factor is calculated over a 2-year window. In the case of the 5-year impact factor, we take a period of 5 years for calculation of the impact factor. The method is the same, but we take a 5-year window for calculation, and it gives the long time average. Okay, because over 2 year, what is the average over the 5 years? Okay, so it is helpful to know us the importance of the journal, right? Now the impact factor is issued in the JCR report. What is JCR report? These are published by the Clarivate Analytics every year. Okay, and only for the journals which are indexed to it. Okay. Then coming to the another metric, which is the site score. Okay. Site score is a metric which is not provided by the Clarivate Analytics, but it is provided by Scopus. Now, the Scopus, what it is doing, their database is different from the Web of Science. They have a different database. Their database is larger than the Web of Science. Why? Because not only they are considering the journal and scholarly publications, they are also into conferences, they are also into articles, okay, other kind of articles, um, magazine reports, and so on. So their database is larger. Okay. Now, the site score is calculated over a 3-year window period. Okay. The method of calculation is almost similar to the impact factor. Okay. But the data is fetched from the Scopus database. Okay. So this means that they use their database because their database is larger than the Web of Science. Okay. So they use their database over a 3-year period and calculate the average, which becomes the site score. Again, a higher value of the site score means it is better. Okay. Now, there are some other metrics also. Let me open the Scopus website. Okay, like for example, we search for the SCI indexing. Similarly, you can also search for the Scopus databases, whether a journal is affiliated, indexed with Scopus or not, that you can search from here. Okay. Now, these are some of the journals you can see over here. And with each of the journal, you have certain metrics associated, site score, percentile, citations, okay, and so on. There are different metrics over here. You can also see this SNP, SJR, the name of the publisher, this all is there. If you want to search a particular journal, you can search a particular journal. Okay, you want to search an area, you can search a particular domain or area for the journals in that domain. Okay, all this is possible. Now, when we say, let's say, for example, this journal, this is the cancer journal. Okay, now if we look at here, then how many percentage of the articles are cited? Okay, how many have been cited? Because what happens when we talk about the impact factor, when we talk about the site score, it is the average citation. This does not mean that each and every article is actually cited. Some may be, some may not be. Okay, so how many percentage of the articles have been cited, that you can see over here. So it's better to have a high number of articles which are cited in that particular journal. Okay.
Now, moving further, this metric, source normalized impact per paper, SNP. Okay. Now, what happens? The impact factors generally they are domain specific. Okay. So, for example, if a journal, let's say of medicine, is giving an impact factor, let's say 2, then how do you judge another journal, let's say computer science or engineering domain, with the same impact factor? Can you compare these two? The answer is no. The reason is that because in some particular domain, the number of citations may be more than another domain. This is the reason you cannot compare only on the basis of the impact factor. Okay. So therefore, this metric was created, and the purpose was that if we are comparing the different domain journals, then we can compare it because we are normalizing the value. We are normalizing the value so that we divide by a particular weight, and the figure that we obtain is a normalized figure and which can be compared across the domains. Okay. I hope you are getting this. Then this is another metric. I will not go much into the details. This is the SGR Schemago General Rank. Let us talk about some of the how do you measure the effectiveness of the author. Okay. Now today authors also have their some metrics through which you can judge what is the impact of the author. Okay, these are some of the popular in metrics for the authors. The most popular is the H index or the Hirsch index. Okay, now the Hirsch index basically, what does it mean? The Hirsch index basically means that if there are n articles uh, which have received n or more citations, okay, then we say the author has a H index of n. Now, how do you calculate it? Okay, it's not very difficult. You just look here. Suppose you have different articles. Just arrange them in the descending order of their citations. Okay, so you can see in this example, this article has the highest citations and so on in the descending order, right? Now, what we have to do, we have to, this is article number and this is the citations. Okay, we have to find a value where the number of citations is greater than equal to this number on the left hand side. Okay, so you can see over here at this value both are equal. Okay, it may be equal or the right hand side has to be above. So it may be equal or above right hand side. So when this value is equal, so we say that this author has an impact H index value of 5. Okay. Now when we say the H index value of 5, it simply means that this particular author has 5 papers and each of them has a citation of 5 or more. Okay. And you can easily find the H index from the Google Scholar page. If you go to the Google Scholar, let me show to you. You can create your account on the Google Scholar, and this way means all the journals which are indexed by the Google Scholar, you can get the database over here. You can see that uh, the articles they are written in the descending order or descending order of their citations. Okay,
And from here, you can see the total number of citations on the right hand side. This is the index value. So this particular author has a very good H index value. You can see this value is 60. So it means that there are 60 papers which have citations of 60 or more. Okay. So these are some of the this is a highly impact author. He has very good number of citations, and these are arranged in descending order. So you can see the index H index value from here, right? Any questions so far? If anyone has any questions, please do let us know. Raise the hand. Sir, as of now, you can continue. There are no questions I can see. All right. Okay. I would finish in another 5 minutes or so. And okay. This is another index, which is the G index. Okay. Now G index basically is like there are some articles which receive a lot of attention, which receive a lot of citations. Okay. To cater to the highly cited highly cited articles, this index was created, and the meaning is similar to like for the H index, but it is a bit different. What you have to do is, for example, again arrange the documents in descending order of the citation. Okay. Now this is article number 1. Just take the square of this number. Okay, 1 has a square of 1, 2 has a square of 4, like this. Okay. Now we calculate the cumulative value of the citations. Okay. So this is the cumulative. For example, the first article has 50 citations, next has 18 citations. Okay. So take the cumulative value like this. Now you find a value horizontally on this table. Okay. For example, here the value is 9. Okay. So the square of 9 is 81. Now the citations, total number of citations has to be above this. If you go to the below figure, the square value is 100, but the total number of citations is less than 100. Okay, so you don't consider this. This is the value. You can see this document 9. Okay, this document 9 is actually will give you the G index. Okay, so here how many articles are there? Total 9 are there above this line. So we say that G index for this particular person will be 9. Okay. So this is basically to cater to the needs of the highly cited articles. So there may be G square number of articles above this line when there are G number of papers. Okay. This is the meaning of G index. There is another metric which is known as the I-10 index. This is simple, and you can also find it on the Google Scholar page. You can see here I-10 index. It simply means that how many articles are there which have citations of 10 or above. Okay, so this metric is simple to calculate, and above 10 citations, so simply count the total number of value. It gives you the I-10 index value. Now, over the years, see, how do we, the citation database, it is built whenever someone cites our research paper. Okay. So whenever someone is citing our research paper, an entry is created, a link is created, and that is how the citation is calculated. Now we are generally citing only the journal papers, conference papers, and so on. Okay. But let's say, what about how do you calculate the impact? Let's say if there is a article on social media, if there is an article on in the newspaper which received a lot of attention, how do you calculate the impact of that particular article? Okay, because that is not a research article, it is not in the research journal. Okay, and there will be no citation. So this means that there should be some other way also, like for example, the social media, they have their own metrics. Okay,
the number of likes, the number of tweets, the number of shares, and so on. Okay, so today we have many different ways of calculating the things, because we are not dependent only on the one media, but we are talking about the multiple media. So we have different ways of calculating, and this is the concept of the alternative metrics. Okay, so there is a growing need for alternate kind of metrics, so that not only we can count on the research, but we can also count on different kind of impact articles in other media, social media, newspaper, magazines, etc. Okay, so see, there are a lot of other things I can discuss, and I can spend another 2 hours, but I think I would not like to keep it too technical. Okay, because there are people from different domains, and therefore, with this, I would like to end the session and take up any questions, right? So, are there any questions? अब चैट बॉक्स खोलो एक बारी, if any questions, let's. Sir, there's lot of appreciation for you. Okay, The people are asking your PowerPoint presentation. Like, if you can share with us, if you want, we can share with the participants. all right. I will share, means with They're you. saying, Doctor, may we get the PowerPoint presentation of this session? Okay, Excellent presentation, wonderful session, very informative. I think what you spoke was very, very important for all of us. thank you so much. If there are any questions, I would like to take those questions. Like, if any queries or anything. There's another like PPT, please. They all want your PPT. Okay. Third one, same thing is coming up, sir. Like, you can also see. Actually, I don't know. The chat box is not moving for me. Uh, I think there is some issue. Actually, yeah, yeah. I can see so many this like PPT request. I have requested Dr. Singh to share with us, and we will share this PPT in the groups. Hope this is helpful to everyone. If no more questions, it's time to formally thank Dr. Singh. Dr. Singh, you gave us a very stirring speech, and we really want to thank you from everyone here and all the delegates who have joined us. And this is like, it's a great pleasure to listen to your wise words and learn so much from it. I thank you on the behalf of entire organizing committee and the delegates who are captivated by your talk. Thank you so much. And I think you are a computer engineer by profession, right? Dr. Singh, Yes, I have a yes. question for you. Yes, yes, please. Yes. Can I see Dr. Singh? I cannot see you. Can we see you, Dr. Singh? Like, it's 101 talk. You You cannot can see me? stop sharing. You can stop sharing the screen. Okay, okay. Yeah. Yes, I can. I'm again getting some questions regarding the PPT. We will definitely share the PPT, and Dr. Singh has been wise enough, kind enough to give us the PPT to us. So I will share in the groups. Sure. Okay. So, We cannot see you still. okay, not visible. Just one moment. Yeah, yeah. Very nice. Thank you so much. So many. We can close the chat box now. Thanks. Okay. Okay, Dr. Singh. Dr. Singh, in the morning we had a conversation with Dr. Anil Changani, who is a professor and head of the Department of Environmental Sciences at MG University Bikaner. He was saying कि हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते टेक्नोलॉजी के बिना. So I just want to have your views on this. And secondly, एक बहुत फनी बात थी कि हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो अब ये हालत होगी, एंड में लिखा हुआ आता है कि कंफर्म दैट यू आर नॉट अ कंप्यूटर.
Yes. Humans are telling that we are not computers. So See, okay. Yes, definitely, this is the truth that we are dependent on the technology, and but technology is here only to help us around. See, we are using technology because it is helping us. So, to the extent that we are benefited, we it is helpful to us, we should be using the technology. There is no denying the fact, and not only there are so many applications which have come up, be it any kind of means like I was means for, to manage your research also. Earlier we had to do all the tasks manually, but now there are tools available. You just your citations can be managed. So this is only making our life easy. But yes, the second part to your question was that it should not be that the technology should be controlling us, because there has been recent in the recent time there has been a lot of focus on we have been talking about AI, ML, and all those things. So these are good, but then means they have been created by humans only. Okay, so they are basically, the purpose is, unless they are misused, the purpose of all this is to assist the humans. Okay, but yes, there is a danger in future that means like we are developing those kind of, for example, robots, and these robots may overpower us. So this kind of possibility is there only if it is the technology is misused. So right now it is being used sensibly, but yes, we have to be cautious, and especially the people who are dealing with technology, they have to be cautious, because we have to somewhere maintain a balance. The technology should be there to assist us, not to guide us. yours only. इसके बाद आपका Okay, so with this, I think this is the main purpose of creating the technology. They should not be guiding us, but they should be assisting us. Thank you so much, Dr. Singh. We are very happy that you were with us, and we look forward to have you more in our future endeavors. And we appreciate your time and your presence. And your lecture was so much appreciated by all the delegates. And please do share your PPT with us, and we'll share with them. You Thank you said so you're much. staying in there. You're staying in Delhi. May I know which place? Sir, I live in Delhi. I live in Dwarka. Okay, I'm also from Delhi, so that's why. Uh, I'm in Shalimar Bagh. Acha, you also hail from Delhi. That's so wonderful. And you are at like GD Goenka, Gurgaon? Yes, yes, good gone. We'll definitely connect sir, sometime. Okay, Thank you so much. And it's thank pleasure. you. Thank you for giving the opportunity. Thank you all the listeners for the patient hearing. Thank you so much, sir. Thank you. So now it's time. Please put on Dr. Dinesh Chahal on this, our next speaker. So our next speaker is Dr. Dinesh Chahal. Dinesh Chahal is working as a professor at the Department of Education in the School of Education at Central University of Haryana, Mahindragarh, India. He is PhD in education, he's MEd, BA, MA in history. He has qualified net twice, one in history and next in education. That's amazing, sir. एक बार ही करना बड़ा मुश्किल होता है. His research areas are teacher education and school education. He has very long academic and administrative experience, which includes a former member of University Court, Academic Council, etc. He is a coordinator of NSS and YRC. He has more than 19 years of teaching and research experience. He has completed 5 PhDs and 5 MPhil under his supervision. He has completed 3 research projects, more than 40 papers at his credited, and participated in more than 300 conferences, seminars, and as a conference as resource person. That's a big number. Congratulations. He has many professional affiliations, such as working with many ministries and parliament affairs. He's a resource person too. It's a big CV, but I'm just calling it down क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. And 2 o'clock he has another assignment.
So he has been a very popular resource person, and he has delivered more than 1,000 lectures and talks in many prestigious colleges. That's a big number. He has organized more than 30 workshops, and he had got 3 times state award for the Youth Red Cross Society services by Honorable Governor of Haryana. Heartiest congratulations, you, Excuse me. sir. With due apology, shall I start? Yeah, and his Hello? achievements are Prime Can you Minister hear me, ma'am? scholarship, ICSR मैम, क्या fellowship. आप मेरे को सुन So पा the रहे हैं? stage is all yours, sir. मेरे को सुन You पा रहे can, हैं आप? हेलो, yes. मेरे को सुन पा रहे हैं मैडम आप? Any participant can confirm whether I am audible or not. So you are audible, Okay. but your voice is very low. Can we have the mic up? No, there is no mic because this is only desktop. Yeah, it's fine, sir. It's fine. You can go ahead. So, shall I start? And Dr. Hukam Singh ji is with me. We spoke about him. He's just sitting with me. He's here. He's our principal and he's a patron of this ISTTP-VI. सर मैं एक बार नमस्कार करता हूं। हुकम सिंह जी ने एक बार अलवर में बुलाया था, लेकिन मैडम ने, जैसा मैंने कहा, मैं तो एक ही हुकम सिंह जी को जानता हूं, वो दूसरे कॉलेज में थे, लेकिन उन्होंने कहा आज हमारे प्रिंसिपल हैं। वो प्रिंसिपल नहीं मैडम, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। मैं प्रणाम करता हूं उनको। एक बार जब मुलाकात हुई थी, मैं हिसार में था, तब उनसे मुलाकात हुई थी एक प्रोग्राम में। तो सर मैंने इनको कहा मैं तो अलवर में एक ही हुकम सिंह को जानता हूँ, वो तो दूसरे कॉलेज में थे, कहते वो हमारे प्रिंसिपल है। तो मैंने मैडम को कहा वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ सर, और कोशिश करते हैं पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं उन पे बात करें, और जितना भी टाइम अभी है 2 बजे तक हम बात करेंगे। तो यही है कि जब हमारा, सर मैं कहता हूं उसको, जब हमारे पुण्य होते हैं तब हमें भारत भूमि पे जन्म मिलता है। जब पुण्य दुगने हो जाते हैं तब हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है, और जब पुण्य तिगने हो जाते हैं तब हुक्म जी जैसे महानुभाव के दर्शन दोबारा से करने का मौका मिलता है। और पुण्य जब चौगने होंगे, जब मैं मानूंगा जब जितने भी हमारे ये साथी 120-25 साथी जुड़े हुए हैं उनके इंस्टीट्यूशन में आकर के मैं इनके रूबरू इनको दर्शन कर पाऊं, जब पुण्य, मैं उस चीज की कामना करता हूं। और उसी के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं, क्योंकि जहां पे खत्म हुई थी वहां से शुरू करेंगे। क्योंकि आज मैं आपसे रूबरू हूं एक खास विषय को लेकर के, और विषय मैडम ने जैसा बताया था पर्यावरणीय हमारी चुनौतियां। और अभी अभी हम अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन विश्व की मैं कहूं सबसे बड़ी त्रासदी के खौफ के बीच से गुजरे हैं। अभी भी खतरा टला है, कितना नहीं टला है अभी आश्वस्त नहीं है, लेकिन इस भयंकर कोविड-19 से संक्रमण के दौर से जब हम गुजर रहे थे सर, जब एक और रंगीला मूवी थी उसका एक सॉन्ग था, तो वो मेरे को कई बार याद आया कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो हल किसी के पास शायद नहीं था उस टाइम पे। और ये क्यों हुआ, उसका जो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं, मैं हम सबको मानता हूं, हम उस अप्रत्यक्ष शत्रु कहूं मैं, सारे संसार के क्रम को बदल दिया। मैंने उस काल को तीन भागों में बांटा। तब एक उसको कहा बीएलडी, एक डीएलडी और एक एएलडी। बीएलडी मीन्स बिफोर लॉकडाउन, जो हमारे कोविड से, फिर हमने एक ड्यूरिंग लॉकडाउन, और जो अब हम हैं आफ्टर लॉकडाउन, या उस कोविड से उभरने के बाद की स्थिति। तो अब हम भूत को छोड़ें, वर्तमान को पकड़ें और भविष्य से जुड़े। लेकिन भविष्य की जब हम बात करते हैं उसकी तैयारी हमें वर्तमान में ही करनी पड़ती है। तो वर्तमान में स्वामी विवेकानंद जी का मेरे को मंत्र, वो जो अलर्ट, अवेक और अवेयर वाला याद आता है। तो जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उसमें अलर्टनेस, अवेयरनेस, अवेकनेस ये बड़ी जरूरी है। और सर हम उस परंपरा से आते हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, जहां सिर्फ मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र की बात हुई, जहां पे हर जीव जंतु की बात हुई। हम उस, लेकिन दिक्कत ये है सर हमारी, 1987 में बटलैंड कमीशन आया, तब उसने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, सतत विकास। लेकिन मैं कहता हूं हमारा ऋषि तो 5000 साल पहले से ही कह रहा था, जहां हम
सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करते थे, जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, जहां हम तेरा मेरा की बात नहीं करते थे। और हमने तो इवन उसको हम कहें, हर एक जो हम जब शांति मंत्र से समाप्त करते हैं, हम 3 बार बोलते हैं ओम शांति शांति शांति। एक दिन मैं विचार कर रहा था 3 बार क्यों बोल रहे हैं, एक ही बार काफी है। फिर मेरे को समझ में आया ऋषि का मतलब यहाँ पे ये होगा मेरी शांति, आपकी शांति और सारे ब्रह्मांड की शांति। तो हम बटलन कमीशन के बाद कहीं ना कहीं ये जो पूरा विश्व उस सतत विकास या उसकी बात करने लगा, हम तो उस परंपरा से जुड़े हुए, लेकिन हमने कहीं ना कहीं भूले की हैं। और वो भूले क्या रही, बहुत सारी भूले हैं। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारी कुछ छोटी छोटी भूले रही जिसको मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। हमारी भूले क्या रही, वो कि हमने भूले कहाँ पे की, हम भूल गए हम किस परंपरा से आते हैं, किस परिपाटी से आते हैं। और उस परंपरा से हम आते हैं, अगर उस परंपरा को हम बरकरार रखते तो शायद ये दिन या इस तरह का जो पर्यावरण या इस तरह की जो चुनौतियां हैं, हम उनसे पार पा लेते। लेकिन दिक्कत वहां पे ये आई सर, हमने सब कुछ की परवाह करते गए, लेकिन इस पर्यावरण की परवाह या इस प्रकृति की या धरती की परवाह नहीं की। मैंने जब कोरोना दौर में एक बार कहा था किसी प्रोग्राम में कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पे। हमने तरक्कियां विकास बहुत किए, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पे, पर कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। वो कब हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान हमने अपने पर्यावरण का किया। इसलिए हम प्रकृति को, प्राकृतिक तौर तरीकों को अगर उनको हम नहीं बचा पाए, तब हम ये पता नहीं सर, हमने तो ये वर्ड सुने ही नहीं थे कभी। जो इस तरह के वर्ड जो कोविड में सुने हमने, लॉकडाउन, हमने तो कभी अपनी पूरी पढ़ाई की वहां पे लॉकडाउन वर्ड पढ़ा ही नहीं, हमें कहीं आया ही नहीं हमारे तो। और दवाइयों के नाम, वो वैक्सीन के नाम तो मेरे को अभी भी नहीं याद किस तरह के नाम थे। तो कहने का मतलब क्या है, चलिए वो तो एक दौर था, गुजर गया, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है अगर हम बचा पाए। मैं हमेशा आशावादी दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखता हूं कि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और वो दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। लेकिन अगर हम भी आज भी, वरना हमें अपने आप को कोसते रह जाएंगे। हम इस सत्य को समझें जो हमारे ऋषि मुनि ने कहा, उसको मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं कि इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और तू खाली हाथ आया था और तू खाली हाथ जाएगा। अगर हम इन विषयों पे सोच ना पाए तो हम करना क्या है, हमें शरीर से संयमित खाने पीने में, मन से संकल्पित सावधानी जिसको हम बोलते हैं, और आत्मा से सौम्य, आत्मा से हम सौम्य रहेंगे। तब उस दौर में मैंने कहा कि अभी तो वो दौर चला गया जब हम वैक्सीन की दवाई की बात करते थे। तब मैंने कहा था सर, लेकिन जो मैं 3 वर्ड बोल रहा हूं वो अभी भी, और पूरे मैं कहूं जब तक जिंदगी है, जब तक रहते हैं, 3 काम जरूरी है: पढ़ाई, दवाई, सफाई। दवाई का मतलब ये नहीं है कि दवाई वैक्सीन के उसमें कहा था, लेकिन मैं दवाई का मतलब यहाँ पे हमारी जो खान पान की परंपरा है उसको कह रहा हूं। पढ़ाई, दवाई और सफाई। एक साथी ने कहा और भी चीजें जरूरी, मैंने कहा फिर कमाई, फिर किसान के लिए मैंने कहा सिंचाई। तो एनीवे, तो पढ़ाई, सफाई, बहुत सफाई का मतलब यहाँ पे पर्यावरण। जब मैं किसान की बात करता हूं वहां पे रोपाई बोलता हूं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन उस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नागरिक कैसे होने चाहिए? तो फिर मैं कह रहा हूं कि स्मार्टनेस मेरी कपड़ों से नहीं है। स्मार्ट का मतलब क्या है कि आप उसमें एस मीन्स सेंसिटिव, संवेदनशील, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रही। और एस मीन्स स्मार्ट, एम मीन्स मोटिवेशन, जहां से भी मिलता है हम मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। ए मीन्स जो मैंने पहले बोल दिया, अलर्ट, अवेयर, अवेक। और आर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल। स्मार्ट सिटी बना लेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल, अगर कूड़े म्यूनिसिपैलिटी ने कचरे के लिए डब्बा भी रख दिया लेकिन हम उससे बाहर डाल रहे हैं, तो वेयर वी आर द रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टी मीन्स हाउ वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। सो स्मार्टनेस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कपड़ों वाली स्मार्टनेस। जो जरूरी है हम इस स्मार्ट
फिटनेस पे काम करें और उसके साथ साथ वी कैन गिव आवर बेस्ट. माई बेस्ट इज समथिंग डिफरेंट. बेस्ट मीन्स बी मीन्स बिहेवियर. क्या मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता हूं, कर सकती हूं, जिससे मैं अपना, अपने समाज का, अपने देश का, पर्यावरण को मैं अच्छा कर पाऊं. ई मीन्स एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मेरे घर का भी और मेरे बाहर का भी, मेरे पड़ोस का भी. मैं दिल्ली के विज्ञान भवन में बोल रहा था सर, वहां पे स्वच्छता अभियान पे बोलने के लिए बुलाया गया. मैंने कहा स्वच्छता अभियान इतना बड़ा अभियान है ही नहीं. कहते आप हमेशा ही उल्टा बोलते हो. मैंने कहा मैं उल्टा नहीं बोलता. मैं कहता हूं जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आप रहते हो, जहां पे आप पढ़ते हो, काम करते हो, ऑफिस है, वट एवर, उसके 5-7 फीट के दायरे को साफ रख लीजिए. यही स्वच्छता है. अगर हम ये नहीं कर पाए तब आपने इसको अभियान बनाया अपने. अदरवाइज तो ये तो एक तरह की, मैं करूं, मेरी गतिविधि थी, लेकिन उस गतिविधि को मैंने ठीक से नहीं किया, मैंने डे टू डे लाइफ में ठीक से नहीं किया, तो दिक्कत वहां पे आई. और कुछ हमारी ओरिएंटेशन सर ऐसी होती है. होता क्या है, मेरी बेटी 3-3.5 साल की रही होगी, कई साल पहले की बात है, मैं हिसार में था, डोरबेल बजती है. मैंने कहा बेटा देखो कौन है. बेटी ने कहा बेटा पापा वो कूड़े वाले आए हैं. मैंने उसी दिन कहा बेटे कूड़े वाले वो नहीं है, हम हैं कूड़े वाले. तो वो तो सफाई करने वाला है, क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन इस तरह का हो जाता है कि सफाई करना तो फला धर्म वालों का, उनका, लोगों का काम है. नहीं, एक पशु भी है, वो अपनी जगह पे साफ करके बैठता है. हम तो कम से कम इंसान है. तो एनवायरमेंट का हम, बी मीन्स बिहेवियर, ई मीन्स एनवायरमेंट, एस मीन्स सर्विस एटीट्यूड. बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो सेवा भावना हम बच्चों में डालें. और टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर मैं मानता हूं, थॉट मैनेजमेंट. जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आप काम नहीं कर पाओगे. नियत नहीं बदलेगी, नियति को आप साफ नहीं कर पाओगे. तो नियत को साफ करना होगा, नियति अपने आप साफ हो जाएगी. अब उस एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उस जितना, कम से कम मैं कहूं, हम ये मानते हैं कि पिछली पीढ़ी ने या जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, हम उससे अच्छा दें, लेकिन वो भी ना दे पाए, कम से कम उसको खराब मत करें. हमारा ये एक पर्यावरण के प्रति रहना चाहिए. नाउ सर वी आर लिविंग इन द ग्रीड कल्चर. मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए. गले में चैन है लेकिन दिल में चैन नहीं. हर चीज मांगता जा रहे हैं, मांगता हो गया हम. तो देना कब सीखेंगे उस प्रकृति को? तो कहने का मतलब, नाउ वी आर लिविंग इन द मटेरियलिस्टिक एज. उस मटेरियलिस्टिक एज में मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, साधन, सब कुछ चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन साधना कौन करेगा उसके लिए? तो ग्रीड कल्चर नहीं, हमें नीड कल्चर की जरूरत है. जितना मेरा, तेन तक तेन भुंजेत. मेरा ऋषि तो 5,000 साल पहले कह चुका है इस उपनिषद में, तेन तक तेन भुंजेत, लेकिन हमने उसको भुला दिया. तो उस नीड कल्चर पे हम आए. और नीड कल्चर से भी ज्यादा मैं कहता हूं, ग्रीन कल्चर के लिए काम करें. हम कई बार फंक्शंस करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, वहां पे हम क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली प्लेट मंगवा लीजिए. हम खाना खाएंगे, उसको फेंक देंगे. यूज एंड थ्रो नहीं. मेरा आपसे अनुरोध है, हम यूज एंड थ्रो की कल्चर को नहीं, यूज एंड ग्रो की कल्चर के लिए काम करें, ताकि हम इस प्रकृति को कुछ दे पाए. और हम कई बार, मैं तो सर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, हुकमचंद जी प्रिंसिपल हैं. ये क्या है, हम कई बार ईगो फ्रेंडली नहीं, इको फ्रेंडली बनना है हमने. ईगो फ्रेंडली से कुछ नहीं होगा, इको फ्रेंडली बनना होगा. तो जो मैं कह रहा हूं कि सारे वातावरण को बचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना होगा. और सोचना ही नहीं, उस पर काम करना होगा. बिकॉज सर 3 I का मंत्र मैं यूज करता हूं. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन. हुकम जी ने या ममता मैडम ने इंफॉर्मेशन दी थी कि प्रोग्राम होगा. दैट वाज ओनली इंफॉर्मेशन. ठीक है, पहला स्टेप है, उससे जरूरी है. लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी दूसरा आई है, दैट इज इंस्पिरेशन. अगर कुछ लोग इस पर्यावरण में काम कर रहे हैं अच्छा, तो हम उनसे इंस्पिरेशन ले. लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा, अकेला इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा. जो थर्ड आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सब के लिए तीसरा आई इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन. बातें तो सुन ली, पता लग गया, बट हाउ टू इंप्लीमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए जरूरी है, हम जितना भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें. तब तो कोई इस बात का फायदा होगा. अदरवाइज तो कोई, ऐसे तो कितने ही लेक्चर करवाते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हम जिस धरती माँ से ले रहे हैं, उस धरती माँ को कम से कम हम उसको बचाएं. क्योंकि धरती भी हमारी माँ है.
तो 3M का एक मंत्र है, मैन, मटेरियल, ये हमारे पास मटेरियल भी है, मैन भी है, लेकिन तीसरा हमने करना है मैनेजमेंट। मैनेज कैसे करें, जो मैं कह रहा था कि ग्रीन ग्रीन कल्चर पे आना है। हम कई बार हरिद्वार में जाते हैं गंगा पे, गंगा बचाओ अभियान, यमुना बचाओ अभियान, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो वहां पे लोग नारे लगाते हैं हर हर गंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके इस नारे के साथ हूं, हर हर गंगे के साथ एक नारा और जोड़ लीजिए, हर बल गंगे, हर पल गंगे। तो जिस माँ को आप इतने उससे पूजते हो, तो उस पानी को बचाने के लिए भी कोशिश करिए। तो उसके साथ हम 4 का एक मंत्र दे रहा हूं जब हम पर्यावरण के विषय में काम करते हैं। 4 क्या है, मेरा समर्पण, दूसरा मेरी सेवा, तीसरा हुक्मचंद जी जैसे विद्वान बड़े लोग हैं उनका सहयोग। तो जब हम समर्पण, सेवा, सहयोग के साथ काम करेंगे, चौथा जिसको आप संस्कृत में पढ़ाते हैं सर, सर्वे भवन्तु सुखिना, अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें समर्पण से, सेवा से और सहयोग से काम करना पड़ेगा। हमने सर सिपाही नहीं, हथियार बदलने हैं, मुसाफिर नहीं, रास्ते बदलने हैं। हमने जो कहूं मैं, एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है, जहां पे हम पर्यावरणीय चिंताओं को बता सके, बच्चों को पढ़ा सके, उसको हमने कहीं ना कहीं बदलना है, उसको हमने कहीं ना कहीं सोचना है। तो तब तो हम जाकर के कहीं ना कहीं इस विषय पे काम कर पाएंगे। और तभी हम शायद, क्योंकि जब हमारी सर घड़ी होती है, मेरी घड़ी खराब है तो मेरा अकेले का नुकसान होगा टाइम का। अगर मेरे घर की घड़ी खराब है, मेरे परिवार का नुकसान होगा। और अगर मेरे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज यूनिवर्सिटी की घड़ी खराब है, तो उस इंस्टीट्यूशन का समय खराब होगा। लेकिन अगर आपके शहर क्लॉक टावर जो लगा है, अगर क्लॉक टावर की घड़ी खराब है, तो सारे शहर का नुकसान होगा। और जब पर्यावरण की बात आती है, ये मेरा अकेले का विषय नहीं है, आपका अकेले का विषय नहीं है, ये सबका विषय है। एक को प्रभावित करता है, दूसरे को प्रभावित करता है। कोई साथी दिल्ली से जुड़ा होगा, वो बता देंगे कितना दूभर हो जाता है उनका सांस लेना। तो कहीं ना कहीं हमें उसको सोचना होगा और सोच के विचार करना होगा, और हमें उस अक्ष मॉडल पे काम करना होगा। अक्ष मॉडल क्या है, AKSH, अपने एटीट्यूड में चेंज। एस मीन्स मैंने कहा था जो हम अपना जो सर्विस एटीट्यूड, के मीन्स AKSH, सॉरी, के मीन्स नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। एस मीन्स अपनी स्किल्स या जो अपना सर्विस एटीट्यूड। और एच सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे करना है सर, हैबिट्स, अपनी आदतों को चेंज करना। अभी मैं कल या परसों बोल रहा था कहीं कि हम कह देते हैं नल का पानी बचाओ, ये साफ रखो। मैं कहता हूं अपनी मेड को 100 रुपए दे दिए मैंने, और उसको कहा नल का प्रयोग आप ध्यान से किया करो। वो बिल्कुल ध्यान से करेगी और घरों में भी करेगी। कहना आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ड्रीम है, लेकिन डेस्टिनेशन बनाना है। ड्रीम टू डेस्टिनेशन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपकी डायरेक्शन। ये प्रोग्राम क्या है, दिस इज अ डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन तो हुक्म जी आपने दे दी, लेकिन उसके लिए दूसरा डी चाहिएगा, दैट इज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तब आप उस डेस्टिनेशन तक, जो हमने सोचा हुआ इस प्रोग्राम के तहत कि हम बता पाए, सिखा पाए, तब शायद उस तक हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में 4-5 माएँ हैं। एक मेरी और आपकी माँ, जिसने हमें संसार में लेकर के आई, उसमें पिता भी है, मतलब माँ बाप जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है मेरी जन्मभूमि। कहीं भी हम बाहर भी जाते हैं तो अपनी मातृभूमि को याद रखते हैं। और एक मातृभाषा, उसकी बात आज नहीं करें, किसी और प्रोग्राम में करेंगे। और चौथा मैं हम मेरी मदर अर्थ, जो मेरी धरती माँ है, और एक मेरे गुरुजन। तो ये 4-5 चिंताएं हैं। तो उस धरती माँ की भी हमें चिंता करनी है, जिसके कारण आज मैं कह लीजिए कि हम सब उससे भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम उस हवा, पानी, भोजन को शुद्ध रखें। क्योंकि आपका जैसा भोजन होगा, वैसा ही आपका जैसा अन्न वैसा मन होगा, और ऐसे ही आपके विचार होंगे, ऐसे ही आपके कर्म होंगे। और यदि खेत में बीज ना डाले, तो कुदरत सर उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर पॉजिटिव विचार ना डाले, तो पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी जगह ले लेती है। तो जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। और आपको जीवन में मिला है, उसे पचाना सीखे, उसे बांटना सीखे।
कि हमें जैसा कम से कम पर्यावरण मिला है, मेरा और आपका ये तो फर्ज है कि हम उस पर्यावरण को वैसा ही उस को लौटा पाए। इसके लिए हमें 7 सह का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1 सह इज सक्रियता, दूसरा सजगता, तीसरा सक्षमता, चौथा संघर्ष, पांचवा समर्पण, छठा संवेदनशीलता जो मैंने आपको पहले ही बात कर ली, और सातवां स्पष्टता, क्लैरिटी हो। क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, और मैं अपने और आपके इष्ट देव से भी इन सातों के लिए प्रार्थना करूंगा। 7 चीज है जो पर्यावरण से, प्रकृति से जुड़ने से ही हमें मिल सकती है। वो 7 सह क्या है मेरे? सुख, पहला सुख निरोगी काया, सबका कल्याण हो। दूसरा खुशी, सबकी। तीसरा सेहत, स्वास्थ्य, जहां बीमारी ना हो। चौथा सुरक्षा, पांचवा शक्ति, छठा सफलता, और सातवां कब होगा? शांति। शांति को हम प्रसन्नता से जोड़ लीजिए, या क्योंकि आज के बाद मैं कह रहा हूं सर, जितने साथी 15 साल बाद मेरे को मिलेंगे, मैं आज उनको एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। 15 साल बाद जो सबसे महंगा प्रोडक्ट होगा वो आपकी शांति होगा। अभी भी है, अभी हम लेकिन उसको समझ नहीं रहे। तो वो शांति कहाँ पे मिलती है? ऋषि मुनि हमारे पागल नहीं थे जो प्रकृति की गोद में जाकर के बैठते थे, प्रकृति से सीखते थे। तो जो आज की समस्या पे, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस पे हम विचार कर रहे हैं, इस भौतिक युग में हम अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। आज सर कुछ मेरे को वो मुहावरे भी याद आते हैं। हिंदी में हम पढ़ते थे, जान बची तो लाखों पाए। तो जान तो बच गई है उस कोविड से, तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन आगे भी इस तरह के खतरे टलेंगे नहीं। वही बचेगा जो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से जुड़ करके रहेगा। क्योंकि अगला मुहावरा हमने पढ़ा था, जान है तो जहान है। तो जान बचेगी तभी जहान को, या इस पूरे इसको देख पाएंगे, नहीं तो फिर हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। मैं उसको नहीं कह रहा। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप जहां भी अपने इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, वहां अपने नौजवानों से बात करिए, क्योंकि वो देश की समस्या नहीं है, नौजवान देश की समाधान बनेंगे। और मैं कहूंगा कि हमारा सबका फर्ज यही होना चाहिए आज इस पर्यावरण को चिंता का, और चिंता ही नहीं, उसको बचाने का प्रण भी। तो हम सबका मकसद होना चाहिए। जैसे सर शाम को पक्षी एक पेड़ पे आकर के बैठ जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि वन के पंछी हने को, जसवंत यादव जी आपका सब्जेक्ट अलग हो सकता है, मोहनलाल जी का और हो सकता है, हुक्म जी का और हो सकता है, सब्जेक्ट और हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन दूसरा हो सकता है, लेकिन हमारा एक मकसद होना चाहिए इस पर्यावरण को बचाने का। जैसे वन के पंछी एक पेड़ पे आकर के बैठ जाते हैं, उनका साइज अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनका कलर अलग होता है, लेकिन एक ठिकाना एक होता है कि वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है। और यदि दिल में हो उमंग, जिसको मैं कह रहा था, आपकी मंशा और आपकी जो नीयत ठीक होनी चाहिए, दिल में हो उमंग, सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न, लेकिन निशाना एक है। वो निशाना क्या है? इस पर्यावरण को किस तरह से हम बचा सकते हैं, किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा एक ये होना चाहिए, हम इस दोहन से, इस दहन से, इस शोषण से किस तरह से मुक्ति पाए। नहीं तो हम अपने आप को ही कोसते रहेंगे कि ये जलजला कैसा, ये सैलाब कैसा, माना खता हुई हमारे से, माना खता हमारी थी, पर कुदरत तेरा हिसाब कैसा। कुदरत ने हमारे साथ हिसाब कर दिया था, तो उसको हम कोसते रहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जरूरी है हम साइंस भी पढ़े, सोशल साइंस भी पढ़े, लेकिन उस गांव को, उस पर्यावरण को, उन मूल्यों को, हमेशा मैं कहता हूं उच्च शिक्षा जरूरी है सर, लेकिन उत्तम शिक्षा भी हो। उच्च शिक्षा जरूरी है लेकिन उत्तम शिक्षा भी हो। तो उत्तम शिक्षा कब होगी? जब हम इस तरह के जो सरोकार है हमारे, उनसे जुड़े। बाहरी स्वच्छता हो लेकिन विचारों की भी स्वच्छता हो। मैं योगा पे बोलता हूं कई बार, अनुलोम विलोम करते, मैंने कहा अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम विलोम क्या है? जब आप सांसों से करते हो, लेकिन अनुलोम विलोम एक विचारों का भी हो, अच्छा विचार अंदर जाए, बुरा विचार बाहर आए। तो उस पर्यावरण के बारे में हम सोच पाए, उन विचारों पे विचार करके हमें उनके लिए जस्ट हेलो सॉरी। तो दैट मीन्स कि हमारे विचारों में भी मैं कह रहा हूं स्वच्छता हो। जैसे मैंने आपको एक कूड़े वाले का एग्जाम्पल दिया था,
तो मेरी यही कामना है कि हम स्वच्छ भी रहें, हम स्वस्थ भी रहें, फिर ही हम सुदृढ़ बनेंगे, तभी हम सुंदर बनेंगे, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे, तभी हम एक बनेंगे। कि माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके हम, माना कि इस जमी को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। तो मैं अपने लेवल पे तो कम से कम प्रयास कर ही सकता हूं। अपने अपने लेवल पे अगर हम प्रयास करेंगे तो ठीक है, पूरे मैं कहूं पूरी सृष्टि को, धरा को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कम से कम हम अगर अपने लेवल पे प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ इस पर्यावरण को भी और इस प्रकृति को भी दे पाएंगे। और मेरा एक पूरा विश्वास है, जो शिक्षक पीढ़ी है सर, वो कुछ भी कर सकती है, और उस पे आशा और विश्वास भी है, आशा और विश्वास भी है हमें। मैं ये क्यों कह रहा हूं, महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज बड़ा बुरा हुआ, अनर्थ हुआ। श्री कृष्ण ने कहा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, आगे आने वाला समय जो आएगा वो बड़ा बुरा आएगा। उन्होंने कहा इससे बुरा क्या आएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांचों पांडव अलग अलग डायरेक्शन में जाना, अगर डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता अजीब देखो फिर मेरे को बताना। तब उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी महाराज हमने देखा, हम पहली डायरेक्शन में जब गए हमने देखा एक हंस है वो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले। उसने कहा इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जिसमें सज्जन लोग अपनी सज्जनता को छोड़ करके दुर्जनता पे आ जाएंगे। तो दूसरी डायरेक्शन से आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा 3 घड़े थे, पहले घड़े में पानी भरा हुआ था, दूसरा तीसरा घड़ा खाली था, कायदे से नजदीक वाले में पानी जाना चाहिए था लेकिन तीसरे में जा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले। उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय जो आएगा वो बड़ा ऐसा होगा कि हम अपने नियर एंड डियर को भूल करके दूर वालों की ज्यादा परवाह करेंगे। मैं नहीं कह रहा सर इनके मोबाइल खुलवा के देख लेना व्हाट्सएप कितना घर वालों को किया, कितना बाहर वालों को किया है, कितना दूर वालों को किया है। एनीवे, तीसरी डायरेक्शन से जब वो आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा एक घड़ा पानी का भरा हुआ था, 2 घड़े साथ में खाली थे, पहले घड़े से आधा आधा करके दोनों में डाल दिया गया, लेकिन जब पहले घड़े में वापस दोनों से पानी डाला गया 1-1.5 लीटर पानी कम रहा, इसका मतलब क्या निकाले। उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय जो आएगा, हम अपने, पहला घड़ा क्या है, मेरे और आपके माँ बाप, हम अपने माँ बाप को 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे माँ बाप, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा बच्चे उन माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे। चौथी डायरेक्शन से जब वो आए, ये हमारे लिए सुनने वाली बात है, जो आशा उम्मीद की किरण है। चौथी डायरेक्शन से आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पहाड़ और जो पत्थर थे वो छोटे छोटे घास के तिनकों पे रुके हुए थे, टिके हुए थे, इसका मतलब क्या निकाले। उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाले समय में पर्यावरण चुनौतियां होंगी। पत्थर पहाड़ क्या है, पर्यावरण की चुनौतियां हैं, धरती माँ की चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां रहेंगी, लेकिन ये घास के तिनके कुछ और नहीं, मेरे अध्यापक साथी है जो उस शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी देंगे, ताकि वो अपने, मैं कहूं, अपने अपने क्षेत्र में भी कामयाब हो पाएंगे और उस पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं वो चिंता करेंगे। तो जरूरी है हम इन विषयों पर सोचें और हम अपना जो इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं खराब ना करें, क्योंकि उस इकोसिस्टम में मनुष्य के साथ और भी, जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, तो उसमें, और अगर कोई भी आदमी हम में से धरती माँ से ले रहा है, इस माँ से ले रहा है और उसके बारे में नहीं सोच रहा, तो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि उस आदमी का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं, उस आदमी का मर जाना बेहतर है जो खुददार नहीं। और धरती माँ जले मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं गद्दार नहीं। तो उस धरती माँ के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं जो हमें जिंदा रखे हुए, जो हमें जिंदा रखती है। और अगर हम इस विषय पे सोच ना पाए तो आगे आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, क्योंकि वो किताबों में छवियां देखेंगी सिर्फ सर पेड़ पौधों की, उनको देख नहीं पाएगी कि ना पनघट, ना बावड़ी, ना तालाब नजर आते हैं, हर तरफ बस कंक्रीट के पहाड़ नजर आते हैं। ये लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी, हर तरफ बस कंक्रीट के पहाड़ नजर आते हैं, फूलों की क्यारियां व पीपल की छांव अब नहीं सुझती है, आज के बालक को नीम और बरगद की छवि पुस्तकों में दिखती है, पवित्र गंगा और यमुना गंदे नालों में बदल गई है, फिर भी इस देश की जनता जाने क्यों मौन खड़ी है। तो एज अ टीचर हम मौन नहीं रह सकते, एज अ टीचर हमें काम करना होगा, हमें आग लगाने के लिए नहीं, बाग लगाने के लिए काम करना पड़ेगा। आग लगाने का मतलब हम उसके बारे में सोच नहीं रहे, और बाग लगाने का मतलब हम उसका कुछ सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम, जो गांधी जी कहते थे कि नेचर है सफिशिएंट फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर द ग्रीड, तो हमें सोचना होगा। हम लालच, लोभ, प्रकृति, ये जो 21वीं शताब्दी में जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम ग्रीड कल्चर में जी रहे हैं, उसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम लालची हो गए हैं।
मैं अक्सर कहा करता हूँ लालच पे इंसान के कि कितना नादान है आदमी, हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है, प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से और समंदर की तलाश करता है। तो लोभ, लालच, उससे अगर हम पर्यावरण को बचा पाए किसी तरह से, और ये नहीं ये सरकार का दोष है, फैक्ट्री वालों का दोष है, ब्लेम गेम से नहीं, समाधान की ओर चलना पड़ेगा। समाधान की ओर सबका जो पृथ्वी माता की रक्षा का, क्योंकि हम सब माता के पुत्र पुत्री हैं, तो पुत्र और पुत्री कुपुत्र तो नहीं हो सकते। तो उस प्रकृति को बचाना होगा और रीयूज, रिड्यूस, उस मंत्र को अपनाना होगा। और एज अ टीचर हम नहीं कहते जाओ करो, जाओ करो नहीं, आओ करें, जाओ करें नहीं, आओ करें, कि हम भी उसका पार्ट होंगे। शायद फिर हम उस जागरूकता के साथ उस मानवीय सोच को बदल पाएंगे। मानवीय सोच क्या है? पॉजिटिव सोच कर पाएंगे। पॉजिटिविटी कितना जरूरी है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात को खत्म करेंगे। एक जंगल था और उस जंगल में भयानक आग लगती है। सर हम सोचते हैं पर्यावरण को हम नहीं बचाएंगे तो क्या है, दूसरे बचा लेंगे, ऐसे तो फिर सारे सोचेंगे तो कोई भी नहीं करेगा इसको। तो होगा क्या, धीरे धीरे वो जो आग है, एक जंगल में आग लगी और एक कोने में खड़ा पेड़ सोचता मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे आग वहां पहुंचेगी। तो पर्यावरण तो ऐसा चिंता है जो सबको चिंतित करनी चाहिए और सबको अफेक्ट करता है। तो जब जंगल में भयानक आग लगी, सर एक छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से 2 बूंद भर भर के वो अपनी उस पे डाल रही थी। एक काला कौवा नकारात्मक, कई लोग होते हैं ना, जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं सर यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, कुछ नकारात्मक साथी होते, कहते इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये आप रैली निकालते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, पर्यावरण नहीं बचेगा। हम कहते हैं हमारा काम पॉजिटिव है, आपकी सोच नेगेटिव है। तो जब वो चिड़िया पानी की 2-2 बूंद करके उस आग पे डाल रही थी, एक नकारात्मक कौवा, नेगेटिव प्रवृत्ति का आदमी जैसे होता है, नकारात्मक काला कौवा, उसने कहा चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। उस चिड़िया का जवाब हम सब के लिए सुनने वाला था। उसने कहा कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो ये है जो सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड। हमने औद्योगिक क्रांति देखी, हमने शिक्षा क्रांति देखी, हमने टेक्नोलॉजी क्रांति देखी, अब जरूरत है क्यों ना हम पर्यावरण संरक्षण क्रांति करें, जहां हमारा वेद मंत्र कहता है हम सबका दायित्व है, ओम दो शांति, वो हम सबका दायित्व है। तो कहीं ना कहीं हम उस प्रकृति से सीखे। मैं एक ही उदाहरण देता हूं हमेशा, पेड़ से देना सीखे। पेड़ जब हरा भरा है जब भी देता है, उसके ऊपर चढ़ो, बच्चों को खेलने का देता है, छाया देता है, फल देता है, और टूट भी जाता है जब गुल्ली डंडा बनाने के लिए, बैट बनाने के लिए लकड़ी देता है, तीर कमान देता है, नदी में नाव बनाते हैं, और काटने के बाद भी कहीं ना कहीं आप उसी पे सोते हो, उसी पे बैठते हो। सोफा बना लिया आपने, कुछ भी बना लिया, तो उस पेड़ से हम देना सीखें। और सुंदर राष्ट्र हमारी सुंदर सोच से बनेगा, सुंदर प्रकृति से बनेगा। और अगर हम इस देश के युवाओं को ये बात बता पाए, समझा पाए कि सच्चाई की राह पर खुशियों के दीप जलाएंगे, हर चेहरा मुस्कुराता होगा, ऐसा प्राकृतिक वातावरण हम बनाएंगे, ऐसा प्राकृतिक वातावरण हम बनाएंगे। क्योंकि अब पर्यावरण और प्राणी में निर्माण में 5 ही तत्व हैं, जिसको हम भूमि, जल, प्रकाश, वायु, आकाश बोलते हैं। तो इन्हीं को दूषित अगर करेंगे तो हमारा शरीर अपने आप ही दूषित होगा। क्योंकि वायु को तो आयु बढ़ाने वाला कहा है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं। 5 महाभूत में संस्कृत में हुकम सिंह जी बोलते हैं श्रेष्ठ, जिसको 5 महाभूत में श्रेष्ठ है वायु। और दूसरा जल, अमृत कहा गया है, पहले क्रम में है बल्कि ये। और अगर शुद्ध नहीं होगा तो कैसे हम जिंदा रहेंगे। हम एक मुहावरा पढ़ते थे, पानी को पैसे की तरह बहाते हैं, लेकिन मैंने कहा आज पानी को पैसे की तरह बचाना है, तभी हम जिंदा रहेंगे। पैसा जिंदा नहीं रख पाएगा, पानी जिंदा रख पाएगा। केप टाउन की स्टोरी पढ़ लेना आप, महाराष्ट्र के लातूर नहीं, केप टाउन की स्टोरी पढ़ लेना, बिल्कुल पानी खत्म हो गया है वहां पे साउथ अफ्रीका में, कैसे जिंदा रहेंगे। तीसरा प्रकाश, चौथा जो मैंने आपको बता ही दिया था आकाश, वायु। तो इन सब का, और अगर आप सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, भगवान भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कृष्ण को प्रिय तो गाय थी। गाय का मतलब जो समग्र पशु वर्ग को एक तरह से, तो पशु संरक्षण भी जरूरी है, माँ का संरक्षण भी जरूरी है, संवर्धन भी जरूरी है। पर्वत, गोवर्धन, तो गायों के साथ साथ नदी, पहाड़, जंगल, सबका श्री कृष्ण महाराज ने एक संदेश दिया था।
तो नदी संरक्षण कानून से नहीं बचेगी, हमारी सोच से बचेगी, क्योंकि हमारी सेहत उससे जुड़ी हुई है। जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे जल है, उस वही तो इकोनॉमी है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करके वो प्रोजेक्ट बना देते हैं, और प्रोजेक्ट का नतीजा आप देख लीजिए उत्तराखंड में। अभी आप जोशीमठ में हर रोज पढ़ते देखते हैं। तो नालों को नदी नहीं बनाना है, सॉरी, नदी को नाले नहीं बनाना है। कहीं ना कहीं नदी नीति तो है, लेकिन हमारी सोच उस नियति में भी आए। हम माँ तो कहते हैं धरती को, नदी को, लेकिन उससे रिश्ते कैसे रखते हैं? कोई माँ को गंदा करता है? माँ को नुकसान पहुंचाता है? तो उस तरह के दोबारा हमारे रिश्ते बने, ताकि कुदरत का गुस्सा, इस उत्तराखंड की जो चेतावनी बार बार हमें मिल रही है, और वो अल्टीमेटम, वो रिमाइंडर देती रहती है, तो वो रिमाइंडर हमें ना मिले। तो गंगा के पावन तट पर हम नई शुरुआत करें, ग्रीन गंगा, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन टूरिज्म। और आज हम प्रण ले, आज तक जो हुआ हुआ, अब नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो कर ही सकते हैं, क्योंकि नेकी करने के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। और 5 गाय का मंत्र जो सबको बचाना है: गाय, गंगा, गौरी, गणेश और गीता। तो हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने को, अपने पर्यावरण को, और अगर हम इस तरह से, आपने बहुत सारा सुना कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं थी जो वो नदी के किनारे ही फली फूली। चाहे आज लंदन में टेम्स देख लीजिए, और आप इजिप्ट में नाइल देख लीजिए, एम्स्टर्डम में देख लीजिए एम्स्टर्डम, लेकिन दिल्ली में जो हमारी यमुना है वो कितना सड़ चुकी है। क्योंकि इतिहास बचाएंगे तो ही भविष्य बचा पाएंगे। और जिंदगी केवल न जीने का बहाना है, जिंदगी सांसों का खजाना है, जिंदगी सिंदूर है पूर्व दिशा का, जिंदगी काम है, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। तो हम उस उम्मीद के साथ कि गंगा कह रही है किनारा करने वालों को, अगर समझ जाओ, नहीं तो मैं किनारा कर लूंगी, और मैंने किनारा कर लिया तो देख लीजिए क्या होगा। तो आज से हम अपना जो कहे, अपने सोच में, अपने चिंतन में, अपने काम में, और अपने सब जो व्यवहार है उसमें हम एक दूसरे का मदद करें। और जितना भी हम कर सकते हैं अपने द्वारा, अपने इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अपने स्टूडेंट्स के द्वारा, और इसी भावना, इसी कामना के साथ कि लम्हे बहुत देखे हैं हमने, ये लम्हे भी बीत जाएंगे, और छोटी छोटी बात पर अमल कर लो, हम सब जीत जाएंगे। जीतना है हमने इस पर्यावरण को बचाने का, कि लम्हे बहुत देखे हमने, ये लम्हे भी बीत जाएंगे। और छोटी छोटी बातों पर, मैंने कोई ऐसे बड़े साइंटिफिक बात नहीं की, जो हम कर सकते हैं व्यावहारिक जीवन में, वही बातें मैंने आपसे कोशिश की है करने की। तो कितना आनंद आया आपके सरोबार का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपसे मिलकर के मैं बहुत आनंदित हूँ। और बहुत जो हुक्म जी के दर्शन हो गए इसी बहाने, नहीं तो हम फिर, मैं तो उनको उसी अलवर वाले गवर्नमेंट कॉलेज में मान के बैठा था, लेकिन अच्छा लगा सुन करके सर कि आप यहाँ आ गए हैं और प्रिंसिपल के रूप में। तो मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ, ममता मैडम का भी, और सारे साथी जो तमाम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े। अच्छा होता हम आपस में मिल पाते, वर्कशॉप के माध्यम से मैं कुछ आपसे बातें साझा कर पाता, लेकिन जैसी व्यवस्थाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो मैं यही दुआ, यही भावना, यही कामना सबके लिए करूंगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना। बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर हुक्म सिंह जी बुलाएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, थैंक यू। कोई सवाल है, सुझाव है, जोड़ना है, बताना है, घटाना है, आप विद इन 2 मिनट्स यू कैन आस्क और एट। Thank you so much, Dr. Dinesh Chahal. It was such a pleasure hearing you. And to sum up the session, I would, and few words for the ISTTP-VI. With a lot of gratitude and respect, I would like to call upon Dr. Hukam Singh ji, who is the patron and the principal of RRC Alwar. Sir, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन. Stage is all yours, sir. Dr. Hukam Singh ji. आज माघ शुक्ला द्वादशी विक्रम संवत 2079 आद्रा नक्षत्र शुभ योग में आयोजित ISTTP-VI के द्वितीय दिवस के इस अवसर पर आज के कीनोट स्पीकर
मरुधरा के प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर अनिल छंगानी जी, गोयनका विश्वविद्यालय गुड़गांव के युवा असिस्टेंट प्रोफेसर जसमीत सिंह जी और सेंट्रल विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के मूर्धन्य प्रोफेसर दिनेश चहल जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए समस्त विद्वत परिषद, आप सभी का भारत भूमि की वीर भूमि राजस्थान, राजस्थान के सिंहद्वार जिला अलवर, मध्य प्रदेश, महान तपस्वी भर्तृहरि की तपोस्थली अलवर शहर, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली की उपत्यका में बसा ये शहर 1930 से स्थापित राजस्थान सरकार का एकमात्र स्वायत्तशासी महाविद्यालय के गौरव से युक्त राजऋषि महाविद्यालय के जुबली सभागार से राजऋषि महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी सुधी जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महादेवी वर्मा प्रख्यात कवित्री की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। प्रोफेसर चहल को मैं सुन रहा था, महादेवी जी ने लिखा था, एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था दानिशुमन। उसकी पंक्तियां हैं, जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, साहित्य कहता है परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या। हिंदी में भी एक दोहा है, वृक्ष कबौ न फल भके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय मनीषा, भारतीय साहित्य दुनिया का सर्वोत्कृष्ट साहित्य रहा है। साहित्य कहा ही उसे जाता है जो दुनिया के हित की बात करता है। हितस्य भाव निहितम तस्मिन् तत्साहित्यम। तो इस प्रकृति ने, ईश्वर ने सब कुछ दिया, जो जगत के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उन पांचों तत्वों को दिया, पांचों महाभूतों को दिया। नदी ली, वृक्ष दिए, और नदी अपने जल को नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को नहीं खाता। तभी तो महादेवी जी ने ये बात कही थी,
कि सुमन फूल फूल की फितरत देखिए, जमाना उसके साथ क्या बर्ताव करता है। फूल खिलता है, राहगीर जा रहा है और उसको तोड़ा, सूंघा और जमीन पर पटक दिया। ये फूल की फितरत है। महादेवी जी कहती हैं कि जिस फूल ने जो जमाने के लिए पैदा हुआ, जमाने के लिए खिला, और जमाने की फितरत देखिए कि उस खिले हुए फूल को तोड़ा, सूंघा और फुटपाथ पर फेंक दिया, और बाद में जो राहगीर आ रहे हैं उसको पैरों से रौंद रहे हैं। तो कवित्री कहती है कि हे सुमन, जब तैने तेरा सब कुछ दुनिया को दे दिया, जब जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, तैने सारा कुछ दे दिया, फिर ये दुनिया तेरी दशा पर रोई नहीं, जूते से रगड़कर मसल कर आगे बढ़ गया। कौन रोएगा सुमन, हे फूल, फिर हमारे लिए कौन रोएगा इस संसार में, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम तो बिगाड़ने के लिए पैदा हुए, हमने तो बिगाड़ा ही है, प्रकृति को छेड़ा है, प्रकृति का अनाप शनाप दोहन किया है, आवश्यकता से अधिक उससे लिया है। प्रोफेसर चहल का कथन और उनका उद्बोधन बहुत सटीक, सामान्य और प्रेरणादायी था। मानव, मैं अक्सर कहा करता हूं, क्योंकि संस्कृत का बालक हूं, 184 योनियां, चलो जितनी भी होंगी, लेकिन श्रेष्ठतम योनि मानव। मानव ही एक ऐसा की योनि है जो संसार पर राज कर रही है। इसने विकास किया, नो डाउट, उसको नकारा नहीं जा सकता, नकारना भी नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति हर जगह वर्जित है, हर फील्ड में वर्जित है। ज्यादा सोना वर्जित है, ज्यादा पढ़ना वर्जित है, ज्यादा खाना वर्जित है, हर फील्ड में। प्रौद्योगिकी की बात करें तो वहां उस फील्ड में यदि अति हुई है तो वो भी वर्जित है। विज्ञान ने विकास किया है, लेकिन विकास से बढ़कर आगे विनाश की लीला भी तैयार की है। और इसका हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग तो पुरानी बात हो गई, लेकिन लेटेस्ट कोरोना जैसा वायरस जिसने दुनिया को तबाह किया और अभी भी कर रहा है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए शास्त्र जो कहता है वो गलत हो ही नहीं सकता। शास्त्र का अर्थ ही अनुशासन है। शास्त्री जो अनुशासित करता है उसे शास्त्र कहा जाता है। तो अति वर्जित है।
विज्ञान ने विकास किया, चाइना और वो बुरहान, वो लेबोरेटरी और वो वैज्ञानिक, ये तो चाइना जाने। लेकिन उसके द्वारा ही विकसित किया गया वायरस न केवल उसके लिए भारी पड़ा, अपितु दुनिया के लिए ना जाने कितने लाखों लोग काल के गाल में समा गए। और वो विज्ञान कुछ कर नहीं पाया। ये मैं जानबूझकर कह रहा हूं। किया ना, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए ना, वो विज्ञान नहीं दिए थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? कि वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका विकास, जो दम्भ दुनिया भरती है विज्ञान का, वो जरा सा रह गया वायरस के सामने। लाखों जिंदगियां तड़प कर मर गई हवा के लिए। ऑक्सीजन इज वायु, तुम इसे वायु ऑक्सीजन कहते हैं, हम तो शास्त्र के आदमी हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, हम तो 5 प्रकार की वायु मानते हैं, प्राण वायु है। उसके लिए मर गई, मानवता तरसती रह गई। जितने संसाधन विकसित किए वो कम पड़ गए। कोई धनवान है, कोई उद्योगपति था, कोई विद्वान था, कोई वैज्ञानिक था, लेकिन हवा के बगैर, प्राणवायु के बगैर मारा गया। और मरते, अपने परिजनों को मरते हुए देखता रहा। ये था सत्य जिसको दुनिया ने देखा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम, मानव। क्योंकि यही दम्भ भरता है कि सर्वश्रेष्ठ योनियों में मानव है, और है भी। दुनिया मुट्ठी में कर रखी है, मुट्ठी में है। विज्ञान का ही चमत्कार है। मैं यहां से बोल रहा हूं, 20 देशों के लोग मुझको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। नो डाउट विकास है, लेकिन अति जब होगी तो कोरोना जैसा हादसा होगा। और कोई वैज्ञानिकता काम नहीं आएगी। इसलिए प्रभु, ईश्वर, खुदा, यीशु, वाहे गुरु, जो भी, और ये सब कुछ नहीं तो प्रकृति, इन सबको नहीं मानते तो ये तो मानोगे कि जो प्रकृति ने प्रदत्त किया उसको सुरक्षित रख लो। आज यूएनओ 3R की बात करता है, 4R की बात कर रहे हैं, 5R की बात कर रहे हैं। 1 वर्ष हमको लगभग हो चुका प्रोफेसर ममता जी, पर्यावरण की अलख जगाते हुए। मेरे ख्याल से 10वां 12वां हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा होगा, और न जाने कितने सुधीजन इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो मानव ने की, जो 5 तत्व प्रकृति ने तुम्हें दिए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों को बिगाड़ो मत। इनके प्राकृतिक जो इनका अवस्था है, जो इनका रूप है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करो। मानव ने इनको छेड़ा, इनका दोहन किया, आवश्यकता से अधिक दोहन किया, संतुलन खराब हुआ।
जब वर्षा होनी चाहिए तो गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़नी चाहिए तो वर्षा होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए तो गर्मी लगती है। बट क्या है मानव, ये तेरा किया है तू ही से भोगेगा, और दुख तुझे ही ज्यादा होगा। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानम पशु भी नराणाम। अरे भाई, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें पशु और मानव में समान है। बुद्धि हितेषाम अधिको विशेषो। हे मानव, बुद्धि ही तेरे पास एक ऐसा तत्व है जो तू इन सबसे अपर है। अर्थ अभी दुनिया को मुट्ठी में करके घूमता है, कोरोना पैदा करता है। ये बुद्धि पंडा तत्व है तेरे पास, इसलिए सारे जीव जंतु मरेंगे लेकिन उनको इतना दुख नहीं होगा, दुख तुझे होगा ज्यादा, क्योंकि तेरे पास पंडा तत्व है, बुद्धि तत्व है, इसलिए तू दुनिया का राजा है, सारी योनियों पर राज करता है। तो इसका मतलब जिम्मेवार तू है। अरे भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सेल सेल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मानव ने बोया है तो मानव को काटना पड़ेगा। इसलिए जब तबाही मचेगी, मचती है, तो सबसे अधिक दुख और कष्ट किसी को होगा तो वो इंसान को होगा, मानवता को होगा, मानव को होगा, क्योंकि वही इसके लिए जिम्मेदार है। वो इससे बच नहीं सकता। इसलिए इस मंच से मैं अपील करता हूं कि जो भी सज्जन हमारे इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष या न जुड़े, अब समय आ गया है कि आपने जो विकास किया है उस विकास का संरक्षण जरूरी है। हम यो कहें कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। जो हम सेमिनार कर रहे हैं, 3R की जो बात हम कर रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसका मतलब है प्राकृतिक संसाधनों के 3R। जो प्रकृति ने हमको संसाधन दिए थे उसमें रिड्यूस करें, उसका रीयूज करें, उसका रिसाइकल करें। और मैं नई बात आ रही है मेरे मुख से कि हे मानव, जो तूने विकास किया है ना, तू तो इन तीनों का 3R कर ले। अर्थात इसमें ही तू तो रिड्यूस कर ले, तू इसको रीयूज कर ले, और तू इसको रिसाइकिल कर ले। कोरोना जैसी स्थिति मत आने देना। हे विकास पुरुष, तू फिर हिरोशिमा और नागासाकी मत बनने देना। हे विकास पुरुष मानव, फिर तू इसे यूक्रेन मत बनने देना। तब तो हम आपके विकास को मानेंगे, नहीं तो ये मानवता और भावी पीढ़ियां यदि बची तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया सुरक्षित है। तो उन बातों को यहां कहने से कोई मतलब नहीं है। आप सब बुद्धिजीवी और सबको पता है विज्ञान ने कितना विकास कर रखा है, किस देश के पास क्या है।
देश तो क्या, आतंकी संगठनों के पास ही क्या क्या है। इसलिए भविष्य में क्या होगा नहीं कह सकते। अगर हमको न्याय करना है मानवता के साथ, क्योंकि इस सदी में हम जी रहे हैं, हमको ये चाहिए कि हम भावी जो पीढ़ी हमारी आए उनके लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को यथावत, जैसा प्रकृति ने हमको दिया था, जैसा जल दिया था वैसा जल, जैसी वायु दी थी वैसी वायु, जैसी पृथ्वी दी थी वैसी पृथ्वी, जैसा आकाश दिया था वैसा आकाश, और जैसी अग्नि दी थी वैसी अग्नि, इन पांचों को यथावत सुरक्षित अवस्था में हम ले आए तो मैं समझता हूं कि मानवता की सेवा होगी, चराचर जगत की सेवा होगी, सारी दुनिया सुरक्षित रहेगी और हमारी भावी पीढ़ियां हमें याद करेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये किया। अन्यथा विकलांगता, अंधता, पता नहीं क्या क्या होगा जो सोच भी नहीं सकते, और विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक एटम को गिराने से उसका प्रभाव कितने वर्षों तक होता है। विज्ञान सुधार रहा है क्या हिरोशिमा को? आज तक सुधारे ना विज्ञान उसको। इसलिए ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें। मैं अपील करता हूं इस मंच से सारे दुनिया के सुधीजनों से कि जो जितना कर सकता है पर्यावरण के लिए हमको करना चाहिए। इसके लिए ये सिर्फ हमारा तो अलख जगाना, एक संकेत देना है कि ऐसा होने जा रहा है, और उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने, आपने सबने भोगा और अभी भी भोग रहे हैं। अभी तो पता नहीं है कब आ जाए दोबारा, भला वेरिएंट आ गया, वो आ गया। तो ये उचित समय है कि हम सावचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। यही मानवता की सेवा होगी। पुनः आज के तीनों कीनोट स्पीकर साहेबानों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें समय दिया, और आपने हमें समय नहीं दिया, आपने मानवता के लिए समय दिया। और अगर प्रोफेसर साहेबान इस काम को नहीं करेंगे, मैं औरों की बात नहीं करता, लेकिन शिक्षकों के लिए तो बहुत जरूरी है। पुनः आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, वेरी नाइस। कैन आई हैव द कैमरा प्लीज? और मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं कह रहा था कि 1 वर्ष हो गया, 10वां 12वां हमारा नेशनल इंटरनेशनल, एक 12वां इंटरनेशनल प्रोग्राम है। तो एक शब्द है साज और समाज। साज का मतलब होता है जैसे गायक है, उसके पास बांसुरी है, हारमोनियम है, ढोलक है, पेटी है, वो साज। अब वो उसको बजाएगा किसके लिए? समाज के लिए। समाज का मतलब श्रोतागण, सामाजिक, जो उसके सामने बैठे। तो आप सारे विद्वान लोग जो हमसे जुड़े, आप सब इसके कारण हैं। अगर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमें नहीं मिलता तो हम ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। लेकिन आरआर कॉलेज में जो ये अलख जगाई, आरआर कॉलेज तो 1930 से है, और मुझे 2 वर्ष हुए हैं इस महाविद्यालय में, और ये साइंस का कॉलेज है, मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं। ये भी अच्छा लग रहा है मुझे कि विज्ञान में मैं संस्कृत तलाशता हूं, संस्कृत में मैं विज्ञान तलाश रहा हूं।
और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ये सारे प्रोफेसर मेरे से संवाद करते हैं। ऐसी ही एक महीयसी विदुषी प्रोफेसर हैं मेरे महाविद्यालय में, वो हैं प्रोफेसर महीयसी ममता सर। प्रोफेसर 72 है मेरे पास, लेकिन उनमें एक है ममता शर्मा। मैं ये कह सकता हूं इस मंच को करने में, इस महाविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में प्रोफेसर ममता शर्मा के महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करता हूं। उनके बगैर ये संभव ही नहीं है और न था न है। मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे देसी कहावत है 5 उंगली बराबर नहीं होती। जैसे मैं कह रहा हूँ 70-72 प्रोफेसर मेरे पास हैं, या अलवर में 4 कॉलेज हैं, सारे मिलके 200 प्रोफेसर यहाँ हैं। तो दुनिया में कितने होंगे, राजस्थान में कितने होंगे, अलवर जिले में कितने होंगे। लेकिन जो जिसका राइट है वो उसको मिलना चाहिए। तो मैं साधुवाद देता हूं विदुषी प्रोफेसर ममता जी को कि आपने ये अलख जगाई और हम सब इसमें शरीक हो रहे हैं। और आशीर्वाद है मेरा आपके लिए कि आप भविष्य में ही मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आप इसी तरह के काम मानवता के हित के लिए करती रहें। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। Can I have the camera, please? सर धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत पहले आपको साधुवाद कि आपने ये जो अलग पर्यावरण संरक्षण की जगाई है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि धरती को बचाना बहुत जरूरी है। घर तो सभी बचाते हैं, तो आप तो धरती बचा रहे हैं, तो साधुवाद तो आपको। और आपका आशीर्वाद तो मुझे हमेशा ही चाहिएगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं भी यहाँ से 2016 से यहाँ पर हूँ, पर मैंने जो ये काम शुरू किया आपके आने के बाद ही शुरू किया है। तो आपको ज्यादा साधुवाद बनता है और आप इसके पूरी तरह काबिल हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और मैं मानती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। और with this we come to the end of the second day of the ISTTP-VI. I would like to extend all thanks to all the speakers who are learned people of their subjects, and they are here and they spend time with us. And I would like to tell all the speakers that hope you also had a wonderful time like we had with you. I would like to thank all the delegates who are with us since morning 11 a.m. I know it's been difficult to be online for such a long time, but I'm very happy that you are with us. And feedback link, we will have only one feedback link, and that will be circulated in the chat box in any of the days. We cannot specify any specific time or duration. I would also request all the delegates to kindly note that there are 3 things which are very important. First is the registration. Please do your registration. आप पहले रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप यहाँ पे हैं बिना रजिस्ट्रेशन को, तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज है होम असाइनमेंट। We will have a home assignment day in between. We will circulate the home assignment questions and will give you enough time to write that. Please do submit your home assignments. And third is the feedback form. Do fill the feedback form. It will be only one feedback form, but do fill it. If you miss any of the 3, we will not be able to provide you the certificates. फिर बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। हम यही समझाते हैं कि आप ये 3 चीज कंप्लीट करिए, क्योंकि यूजीसी के हिसाब से मैंडेटरी है।
अगर आप इनमें से एक भी मिस करेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज, बार बार ये आता है कि हमने किया था, हमने फॉर्म भरा था, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ कि हम कुछ भी मैनुअली नहीं करते। हमारे सारे सिस्टम गूगल मीट पे चलते हैं, हम क्लाउड पे सारा काम करते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है और आपने तीनों काम किए हैं, रजिस्ट्रेशन, फीडबैक एंड होम असाइनमेंट, 3 कॉलम्स को हम मर्ज करते हैं, अगर इसमें से एक भी चीज आपकी मिसिंग है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। So with this, we come to the end, and this is Dr. Mamta Sharma, Organizing Secretary of ISTTP-VI, with my team, Sheetal, Rishi, and Dilip, and with my patron, Dr. Hukam Singh Ji, signing off from the campus of RRC Alwar. We will see you all tomorrow sharp at 11:15 a.m. with the new bouquet of knowledge, with new speakers. Until then, take care and have a wonderful day ahead. Bye bye. Take care. Can we off the meet now?